तो हे गाइस, आ गए हैं यहाँ पे टाइटन इंटरनेशनल रूम वाले यहाँ पे स्क्रिम्स में। और आज यहाँ पे मैं हूँ आपका दोस्त सिग्मा, और हमारे साथ है लाइट। और लाइट यहाँ पे इंग्लिश में कास्टिंग करने वाला है, और यहाँ पे मैं कास्ट करने वाला हूँ हिंदी में। तो दोनों ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा होने वाला है। तो यार आप लोग रिलैक्स करो, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक एंड पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धमाकेदार और इंटरटेनिंग ये स्ट्रीम होने वाली है। So hey guys, what's up? My name is Light and joining me here today is Sigma Plays. We will be your casters for the day and we will be casting POLABU Gaming's Titan International Qualifiers for the other region. So let's see how it goes. Let's look at the map, Sigma, and let's look at the plane path. So it goes from Lipovka to Rozhok to Georgiopol. I'm assuming that most teams will go for hot drops, but we have seen in the past that, especially in the Korean tournament, that people haven't been going to the school region as much, and they're rather going for the water city that is just above the ruins. I wonder if any team will actually go to the military base, but let's see. यस और हाँ, यहाँ पे जैसे ल्यूबकोप का जार्जोपोल, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हॉट ड्रॉप वाली जगह हैं। रोजॉक है बीच में, पोचिंकी भी कुछ लोग जा सकते हैं, स्टेल्बर जा सकते हैं, प्रिजन, बहुत सारी अच्छी जगह हैं जहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फाइट देखने को मिलेगी। और अब यहाँ पे हम लोग जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा मैप, और साथ में इतने सारे प्लेयर 67 पीपल्स यहाँ पे हैं अभी। तो guys, all we have to see is where do these people drop, and maybe we'll get to see some drop clashes such as the team VG. Let's look at what team number that is, and we'll have to see where the team is actually going. So we have two players that are going to Yasnaya, but what about those other players? Where are they headed to? Something that we should see. So two of them are going to Yasnaya, two of them are going near Kamishki. It is a split, but is it the right decision? Because team AW will be following behind, but what do we see? Team VG is going for those really isolated locations. Maybe they just want to play safe in the beginning. यस एंड यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, टीम नंबर 3 यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे मिल्चा, और मिल्चा के आसपास बहुत सारी टीम हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। 4 से 5 टीमें यहाँ पे आसपास घूम रही हैं। और अगर हम बात करें केवाइस रेंजा के बारे में, तो ये थोड़ा सा दूर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इनका थोड़ा बहुत ग्लिच हो रहा है। सो अगर बात करें अदर टीमों की, तो यहाँ पे हमको एक टीम पोचिंकी के साइड भी देखने को मिल जाती है। और टीम नंबर यहाँ अगर हम 4 की तरफ देखें तो Team number 4, let's switch to team number 4 and see where they are headed to. I mean, some people have already started fighting and team number 4 is still dropping, but I think team number 3 is in the midst of a fight, or is it so? Because we need to find out if there are fights going on right now. So let's look at who was knocked out. I believe it is team number 14's Cosmic Lava, who was unfortunate enough to get knocked out this quickly. But let's see if his teammate is able to revive him. If you look at the scenario as such, then he is out in the middle of nowhere, because his teammates are nowhere to be seen. So what do you think, Sigma? Do you think team number 14's Cosmic will be able to be revived? आई थिंक कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन काफ़ी तेज़ी से हेल्थ जा रही है, और सभी प्लेयर्स के पास अभी उतनी अच्छी लूट भी नहीं है, और आसपास बहुत सारे प्लेयर्स हैं। बट हाँ, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कॉस्मिक डीएफ ने अपने टीममेट को रिवाइव करना भी स्टार्ट कर दिया है, और इनके प्लेयर ने गाड़ी भी कलेक्ट कर ली है। सो ये काफ़ी ज़्यादा तैयारी के साथ लग रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इनके सामने टीम नंबर 17 के काफ़ी सारे प्लेयर्स दिख रहे हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रिपेयर रहना होगा और सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। So Sigma, what do you think? We have seen in the past that when it was the Troy map, we have seen that they are using the car meta, that is the M249 plus, or rather just any other LMG, and then a vehicle, and then they just take fights in the vehicle. Do you think we'll get to see something similar here, or do you think we'll see something more robust, something more, different from what we have already seen in the past? बिल्कुल, क्योंकि देखो आज अगर हम न्यू स्टेट की बात करें, तो यहाँ पे जो कार चेजिंग फाइट होती है वो बहुत ज़्यादा चलती है, और यहाँ पे जो कार में होता है वो अधिकतर गन फाइट जीतता है। तो अगर कोई खड़ा है खुद के फाइट ले रहा है, और कोई अगर यहाँ पे गाड़ी के थ्रू रन करके उसके चारों तरफ गाड़ी घुमा के फाइट लेता है, तो यहाँ पे तो वही फाइट जीतता है। अधिकतर यही देखने को मिला, मैंने तो जितना खेला मुझे यही सब चीज़ें देखने को मिली हैं। Well, let's look at team number, let's see which team this is, because this is in the Giorgio city, team number 19. I believe they are in the middle of a fight. And let's keep spectating team number 19's player number 2, because I think he's on to something. He spotted someone.
He shoots, Yes. but he's unable to connect a single bullet. But he has given away his position. It's going to be really difficult for him to now get out of this unscathed. Maybe he can just take a U-turn and leave, but his teammates may be able to provide him with some cover. यस, और अगर हम देखें हाँ तो यहाँ पे 16 नंबर के आसपास और इनके आसपास काफ़ी प्लेयर हैं और उनको टीम नंबर 19 के प्लेयर ने काफ़ी चारों तरफ से घेर रखा है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो DRMLNUS यहाँ पे नॉक हो गया। और यहाँ पे अगर बात करें टीम नंबर डार्क फेक्सोनिक को, तो वो भी यहाँ पे नॉक हो गए मिडिल ऑफ द रोड। यहाँ पे ये डायरेक्ट रश करने की कोशिश किए हैं लेकिन यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। So this player, his name is DR minus. Well, he's knocked out, but his teammate Rail is alive, and he's been trading kills for him. But did you notice the team number 19 DW? DW's person. Wait, is that team DW or okay 16? So 16 is DW, and one of those players actually killed his own teammate with a grenade. If you looked at the kill feed, you would find out that he killed his own teammate with a Yes. grenade. That would be very interesting to see, Sigma. यस यस। I mean, if you actually think about it, then won't he be really mad at his teammate? Because, you know, this is not the kind of gameplay that you would expect in the beginning of a qualifier. Because, you see, that's one gun that is already down. And who expects this? I did not expect that. यस Well, अगर हम बात करें यहाँ पे टीम नंबर 16 की, तो इनके तो 2 प्लेयर चले ही गए और ये टीम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो भी चुकी है और दोनों की हेल्थ भी काफ़ी कम है। अगर लूट की बात करें तो इनके पास सिर्फ एक ही मेडी किट है। अगर ऑटोमेटिक की बात करें, इनके पास कुछ कैंस हैं और ज़्यादा लूट इनके पास है नहीं और ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये गाड़ी लेना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें टीम नंबर 16 के फर्स्ट प्लेयर की, तो इनको गाड़ी मिल भी चुकी है और आगे ये but बढ़ रहे हैं। did you notice that he's actually driving in FPP? He's not driving in DPP. I mean, I don't know Yeah. why he would give up on that. Like, this player has been constantly playing in FPP for some reason. I still don't understand why. Maybe it's just the way he plays. But giving up that advantage just signifies that he's a true player, right? He's a true gamer. Talking on the other hand about team number 19, if you look at team number 19, then they have no reason not to revive each other. But yeah, I think they finally realized that team number 16 has left, and so this person Faxonet will probably get a revive. So see, he's lucky there that the team number 16 left. Otherwise, he could have died here. It's just $1,200 that they saved up on quite some time, and now they can loot the credits at double the speed. Probably get their teammates here much quicker. बिल्कुल। और यहाँ पे अब इनको अगर अपने टीममेट को रिवाइव करना है तो इनको काफ़ी ज़्यादा लूट करनी पड़ेगी। अगर जैसा हम देखें तो इनके पास सिर्फ 100 कैश है, 100 रुपये का कैश है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे इनको अच्छी लूट भी चाहिए, अपने आप को अच्छे से यहाँ पे इनको हेलमेट भी चाहिए। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इनके पास हेलमेट भी नहीं है, वेस्ट हेलमेट इनका सारा का सारा डैमेज है। थोड़ा बहुत इनको लूट यहाँ पे मिल रही है, कैश भी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। अगर ये गेम में आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो इनको यहाँ पे अपने सारे के सारे टीममेट को अभी रिवाइव करना होगा, बुलाना होगा। Well, you know what's interesting to see here is, even though if you actually look at the map, right, just open up your map and see Ferry Pier is empty, military base is empty, mansion, prison, Lipovka, Milta Power, a shooting range, Severny, these places where you would usually find people, even Ferry Pier, right, in your usual classic matches, you would definitely find players popping in there, but in these scrims, you never find it like that. And at the same time, you see all of these different teams going for the Water City and whatnot. And that's why team number 7, I believe it was team number 7, which has been completely eliminated this early in the game. I don't think, Sigma, it feels very good to be eliminated this early in the game. बिल्कुल। और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी हो जाता है अगर आप ऐसी कोई गलती करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे टीम नंबर 8 की, तो ये वीजी की टीम है और यहाँ पे ये एकदम ही बाहर दिख रहे हैं, इनके आसपास कोई भी दिख नहीं रहा है अगर वीजी की बात करें। और इनके पास अभी ज़्यादा लूट हो नहीं पाई है। अगर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं तो इनके पास एक ही गन दिख रही है और 3 लेवल का बैकपैक, एंड ये एकदम कोने काफ़ी ज़्यादा पैसिव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी ये 1 से 2 जोन सर्वाइव करना चाहते हैं और सर्वाइव करने के बाद आगे फाइट लेने की कोशिश करेंगे। You know, when I was playing the in the very beginning, right, in pre-season 1, when I was trying to push rank, I think I did the same thing. I mean, I'm sort of ashamed to say it, but like in there, I mean, I had to play like 8 hours a day. And I just found it really exhausting to play like with all my attention invested all the time. So what I would do is, like, I would get a squad,
and then I would sit outside the zone for like 2 or 3 zones and then just stock up on healings, and in the end zone would usually take a fight or something, would probably also get a few bot kills here and there. Honestly, it's not my best thing, it's not my proudest moment, but yeah, I mean, I feel similar vibes from Team VG. I think they're trying to do the same thing with a 2-and-2 split with Kamishki and this little area, this unknown little village of a place. Maybe they shall be able to find some good loot and they'll be able to survive till the end. बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ पे हम टीम नंबर 17 की, तो ये भी एकदम ही अलग दिख रहे हैं यहाँ पे। और So team number 17, talking about team number 17, they are out in the open. I mean, you wouldn't really want to be there. I don't know why they are playing this way, but probably they have some strategy that we are not able to understand at this moment. Here's the thing about them though. बिल्कुल, अब बात करें अगर जोन की, तो यहाँ पे जोन से 2 ही 3 टीमें मतलब बाहर दिख रही हैं। अगर हम बात करें पिछले मैचेस की या अदर मैचेस की, तो वो काफ़ी ज़्यादा टीमें हम लोगों को जोन के बाहर या जोन के साथ चलती हुई दिखाई दे रही। लेकिन एक अगर इस मैच की बात करें, तो यहाँ पे हमें अधिकतर टीमें जोन के अंदर ही दिखाई दे रही हैं और सभी जल्दी से जल्दी जोन रोटेशन ले रहे हैं, अर्ली जोन रोटेशन। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें 2 टीमों की, तो एक यहाँ पे नोवा रिपनोई में एक बाहर अभी जोन के अंदर ही सर्वाइव कर रही है, और बात करें यहाँ पे टीम नंबर 8 की, जो वीजी की टीम थी, वो भी अभी जोन के अंदर ही वहीं पे सर्वाइव कर रही है, लेकिन वहां से वो जोन के थ्रू रोटेशन करने की कोशिश कर रही है। Right, so Sigma, can you take over for a bit? I'll be back in 5 minutes. I just want you to look at the game and I want you to tell me, what do you think, who do you think is going to win, and where do you think the circle's going to go? Continue you. Can you tell me what do you think the circle's gonna be like at the end? Can you try to predict that? हाँ, अगर मैं प्रिडिक्ट करने की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्कल जार्जो के साइड बनने वाला है अधिकतर। मुझे तो नहीं लगता कि और किधर भी जाने वाला है। मुझे अगर मेरी बात है, तो मेरे हिसाब से ये जार्जो के साइड ही जाने वाला है। Okay, so why do you think Georgia? Have you seen circles like these before? यस, मैंने कई सारे मैच खेले, तो वहाँ पे मुझे जार्जो देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जार्जो जाना चाहिए ऐसे जोन। मतलब प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मैचेस में अगर बात करें जोन प्रिडिक्शन की, तो जोन प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वेल, अगर बात करें भी टीम नंबर 1 की, तो यहाँ पे ये इमोट करते हुए दिखाई दिए हैं। SW जूम की बात करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा चिल माहौल में दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं और इन्हें कोई भी टेंशन नहीं है। सो मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चिल माहौल चल रहा है। Definitely. I mean, you sort of have to wait for everything and then you just get so bored that you just start dancing. And I think dancing's one of the coolest things about this game, because if you look at the emotes, they're really detailed and they look lifelike. And, I've been trying to collect as many emotes as I can possibly, but I haven't gotten very lucky with that. बिल्कुल। अब बात करें यहाँ पे टीम नंबर 8 की, जैसे कि मैं वीजी की बात कर रहा, तो ये स्टिल अभी जोन के अंदर ही हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं और जोन के थ्रू ही चल रहे हैं। और FVP की ड्राइविंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। FVP टू TPP ये बार बार स्विच कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये FVP में ज़्यादा खेलते हैं, दैट्स वाई इनको FVP ज़्यादा पसंद है। And if you look at the map, and if you look at team number, well, let's see, on the mountains, team number 11, that is AW team, they have already taken this point. This is called an early rotation, guys, and early rotation can help you out quite a lot with your positioning. I mean, the best thing about it is, like, if you've already taken the whole mountain for yourself, you can scare away teams that are coming in, especially if it is early in the round or even later in circles. It will really help you out if you find a very good stronghold with lots of cover and lots of height advantage, because you see, height advantage is a very big thing in this game. It's easier to kill someone who's below you in altitude versus someone who's high up there. Certainly it is not the easiest thing, especially because of the way TPP works, right? So it's much easier if you're higher up there than someone who's down there below.
बिल्कुल, अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे कि ये अगर इतनी ऊँची यहाँ पे अगर पोजीशन लेके बैठे हैं, तो इनको एक पूरा का पूरा एरिया कवर हो रहा है। इनको पता चल रहा है कि कहाँ से कौन से प्लेयर आने वाले हैं, कहाँ से कौन जा रहा है, कौन रिवाइव होके आ रहा है, किसने ड्रोन से सामान मंगाया है। इनको सारी की सारी जानकारी हो रही है और यहाँ से अगर इनके पास स्नाइपर और एक अच्छा स्कोप भी देखने को मिल रहा है, तो इनको स्नाइपिंग करने में भी, स्नाइप करके एनिमीज़ को किल करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। Right, so you remember team number 19 and team number 16 had that skirmish there in Georgia City. Now team number 16's player is already revived. They're heading down to the quarry area, and perhaps they'll be able to call for one more of their teammate. If you look at the map, you'll see the drone going to team number 16. Maybe they'll be able to get all of them. But what do we see? We see the drone has been shot down. Team number 20's PCR Mania has actually taken down the drone, and let's see what he finds. If you look at team number 20's player number 1, he's gotten something out of it, but from the amount of stuff that he's collected, it has just some ammo. So not all hope is lost, but if they have only ordered ammo, then who knows? Who knows what's up? Maybe team 20 has just gained an extra ammo, but what use is ammo without the real gun? एमओ, हाँ, और क्या, अगर इनके पास गन नहीं होगी तो एमओ को कोई यूज़ नहीं होगा। बट इनके पास काफ़ी ज़्यादा कैश हो गया है और इनके तो सारे, if all of their teammates actually decide to get a gun from all the credits that they've accumulated so far, it shouldn't really be that difficult. ऑफ कोर्स, लाइट कंटिन्यू। Alright, and if we're looking at team number 20's PCR Mania again, he has L8583. It's a relatively new weapon with a 3x scope on top of it. So here's the thing about the L8583. It is a really good gun. It is very stable, but it is only something that you should probably be using at longer ranges in the game, because if it is for a shorter range, then the amount of damage that you're going to deal is pretty low. So you have to be careful about that. It's not easy to use the gun in close range, but if you can manage that, then definitely you'll be able to get kills on all the ranges. And when you talk about the L8583, when you customize it, it becomes more stable. But again, the damage on that thing is perhaps something best left to medium to long ranges. Also, अगर हम बात करें यहाँ पे टीम नंबर 13 की, तो इनके आसपास काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स दिख रहे हैं और इन लोगों ने तो कोई भी यहाँ पे कपड़े नहीं पहने हुए हैं। इन लोगों ने शायद ये ग्लिच की वजह से मुझे कुछ गलत दिखाई दे रहा था। आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे अगर बात करें इनकी टीम की, तो इनके आसपास काफ़ी ज़्यादा बंदे दिखाई दे रहे हैं आसपास। तो आई थिंक यहाँ पे अब थोड़ी बहुत फाइट हम लोगों को देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जोन भी काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टीम्स आपस में आसपास आ चुकी हैं। सो अगर बात करें इनके पास, तो टीम नंबर 5 इनके थोड़ा सामने दिख रही है। टीम नंबर 13 ये खुद हैं। And if you're looking at the map, then you'll see team number 19, which was going towards an enemy team. They take a U-turn for some reason. Let's see if team number 19 actually goes and clashes with another team. They certainly have spotted team number 8. Let's see who is the winner of the two. बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जाके सीधा रश करने वाले हैं और इनको बिल्कुल पोजीशन मिल गया और इन्होंने अपना M4+3X का स्प्रे देना स्टार्ट कर दिया है और एक दो बुलेट टीम नंबर 8 के प्लेयर से कनेक्ट भी हो गई हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, इनके बीच में कौन नॉक होता है, कौन फिनिश होता है और साइड में इनके हम लोगों को ड्रॉप भी देखने को मिल जाता है। So here's the thing about these clashes, right? They have to be really, really careful. And you see, team number 8 has only 3 players there. One of them is already, I mean, 2 of them are knocked out, and with very nicely timed grenades. So if they're able to get the drop on another person, then team number 8 is just gonna go out for a toss, and he's probably gonna lose. I mean, I wouldn't want to be BG entries at this moment. He's perhaps really, really scared. He took the right decision. He decided to go away from there, taking a vehicle. Definitely gets the low. 1 bullet from Lionelli, and team 8 meets their doom. Of course, यहाँ पे अगर बात करें टीम नंबर 4 does go for a third party here. It's going to be really difficult for them to defend themselves, but if team number 4 decides to gang up on them, then team number 19 will be caught with their pants down, because they're out in the open, especially Dr. Lionelli is out in the open. But let's look at other fights that have been going on. Team AW will have to find team AW, because I believe they have been fighting for quite some time now. So I believe that's team number 11. Let's look at team number 11. Maybe they have been fighting. Yes, as I was telling you,
they perhaps have been fighting right now. But जैसा कि अगर बात करें यहाँ पे, जैसा कि ये टाइटन इंटरनेशनल कप चल रहा है, बट अगर बात करें यहाँ पे इस रूम की, तो ये आई थिंक ये रूम थोड़ा सा ग्लिची है जितने भी लोग देख रहे हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि मैं किसी भी स्विच करता हूँ तो वो ईजिली स्विच नहीं हो रहा है. आई हैव टू टैप ऑन दैट आई थिंक 8 to 10 times. it's okay, it's understandable. I mean, this is what happens when there's a lot of stuff that your phone has to process. It's okay, we've seen this happen in other games as well. It's not the game, it's just the phone sometimes has to process a lot of things, and that's why you have the iPad advantage. And talking about iPad advantage, there are a lot of people who say that iPads have a lot of advantage in the game because it's smooth and the FPS is better. The field of vision is also better. What do you think, Sigma? Do you think iPad actually has an advantage? बिल्कुल बिल्कुल, iPad में बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि अगर बात करें iPad टू मोबाइल, देखो दोनों की स्क्रीन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है. अगर आपको स्नाइपिंग करना है तो iPad से अच्छी स्नाइपिंग आप कहीं भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको इसको बड़ा दिखता है. Yeah, that's okay. But if you look at team number 16, team number 16's automatic has knocked out one of their enemy persons, and he's also shot at number 19's. I think his name is Faxonet. I don't know how to pronounce it. Mate, if you're watching this, I'm so sorry if I butcher your name, because again, I'm not sure how that's pronounced, but Faxonet has also been damaged a little bit by team number 16. So let's see how this fight turns out. Both of them have snipers on their team. Here's the interesting thing. Team number 16 has 2 SLRs, whereas on team number 19 you have 2 sniper rifles, like proper. और यहाँ पे ऐसा लगता है कि इन्होंने टीम नंबर 19 के ड्रोन को यहाँ पे तोड़ दिया है. उन लोगों ने सामान मंगाया था और उनके ड्रोन को तोड़ा जा चुका है. दोनों टीमें आमने सामने दिखाई दे रही हैं और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए बिल्कुल उतारू तैयार हैं. और उन्होंने शायद आई थिंक टीम नंबर 19 के सिर्फ 3 प्लेयर्स ही मुझे देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने ग्रीन फ्लेयर गन मंगाई थी. लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो टीम नंबर 19 यहाँ पे जोन के थ्रू वो रोटेशन दे रहे हैं इनसे दूर. वो फाइट लेने में कोई भी ज़्यादा भी इंटरेस्टेड नहीं है. टीम नंबर 19 गाड़ी लेके कोने से ही जोन के थ्रू अलग जगह निकल गई है. It is very good that they don't take fights here. I mean, it's actually a smart move to not take fights right now, because obviously this is the early game. You don't want to be knocked out early in the game, especially when you like if you fight and you get knocked out, then you consume your heals, and you don't want to be running low on heals later in the game. That would be very unfortunate, because you see later in the game, because of the zone, you may have to heal up, or just something happens and you will have to heal up again. Positioning points, like position points, are really, really important here, and if you want to succeed in this game, then you will have to know how to get those position points. बिल्कुल, क्योंकि डिसएडवांटेज में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी फाइट लेनी चाहिए, और ये एक स्मार्ट डिसीजन था. अब यहाँ पे ये लोग पूरी हील कर रहे हैं और इन्होंने अपनी नज़र बना ली है. यहाँ पे इनके सामने 2-2 टीमें दिखाई दे रही है. टीम नंबर 19 के सामने अगर बात करें तो 2-2 टीमें हैं, और बिल्कुल ही जोन के एज पे खड़े होकर ये लोग फाइट ले रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं. लेकिन ये क्या, यहाँ पे टीम नंबर 19 के एक प्लेयर नॉक हो गए हैं. इनको काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है, और साथ में अगर इनके पीछे देखें तो इनकी भी टीम पीछे इनके साथ आ रही है. This is another one of those things where you have to be really careful about where you actually stop, because you never know who might be waiting to just get the drop on you. Also, team number 5, who just got the knock on team number 19's player, they are running away. They are not taking this fight. Maybe they just wanted to scare the players away. And here this is a really good tactic, because you don't want to take a fight, so you just mark your territory, and then you basically say that, hey, I'm not here to fight you, but you better not come close to me, otherwise I will have to initiate the fight with you. बात करें अगर अभी टीम नंबर 13 की, तो इनके आसपास टीम नंबर 99 यहाँ पे अगर बात करें टीम दिख रही है, और इनका एक प्लेयर नॉक है. इनके पास काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने स्मोक किया है, शील्ड लगाया हुआ है, और इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट हम लोगों को देखने को मिल रही है. इनको थोड़ा डैमेज भी पड़ रहा है. Team number 13 has to be really careful with this. I mean, they did save their car and they do have a lot of smokes going on, but they don't really have anywhere to go. If you look at the situation, well, they are a bit lucky in the sense that team number 5 and team number 10 are in a very good fight, and maybe team number 13 will go for a third party and they do rush on them. Let's see if they're able to kill team number 10, because team number 10
who were the aggressors before have become the hunted. बिल्कुल, और यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी तगड़ा रश किया और यहाँ पे पूरी की पूरी टीम फिनिश हो चुकी है और ये काफ़ी शानदार क्लच था। Team number 10 barely making it. I don't know, is it the top 10 yet? I'm not sure if it's still the top 10, but definitely Team 10, good try, GG's. It was just not meant to be for this match. Better luck next time. ऑफ कोर्स। अब बात करें यहाँ पे टीम नंबर 13 की, तो इनका एक प्लेयर नॉक दिख रहा है और इनके सामने यहाँ पे 2 से 3 टीमें हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा अभी सोच समझ के खेलना होगा, काफ़ी फूंक फूंक के कदम आगे रखने होंगे क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर इनका एक भी कोई भी दिक्कत करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम करते हैं या कोई भी एक गलत डिसीजन लेते हैं तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा होने वाला है, क्योंकि इनके सामने देखें तो टीम नंबर 19 के प्लेयर, साइड में देखें तो टीम नंबर 12, दूसरी साइड यहाँ पे भी कई सारी टीमें देखने को मिल रही हैं हम लोगों को। And that is really interesting to see. But if you actually open your map and you look at the zone, right? The zone's pretty open at this point. And if you look at the mountains, I mean, Team 11 AW did get the early pick. They did go to the mountain. They did secure their position. And now you see how much of an advantage they have. I mean, these teams, on the other hand, Team number 20, PCR, they are out in the open. They don't really have a lot of cover. If team number 11 decides, then they can perhaps knock down and finish team number 20 very easily. But then again, they don't really have a lot of time. If you look at the clock, they have less than 10 seconds in which they have to go inside the zone, because this zone is going to do a lot of damage, Sigma. बिल्कुल, अगर अगर जोन ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाए तो इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिलेगा और अगर सामने इनके कोई भी प्लेयर मिल जाता है जो इनका अगर इंतज़ार करके बैठा है तो इनके लिए तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिल चुका है इनको। लेकिन हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी आसानी से ड्राइविंग करके आगे जा रहे हैं, लेकिन टीम नंबर 3 के प्लेयर सामने ही है। पूरा का पूरा कंपाउंड उन लोगों ने होल्ड करके रखा है और इनको कोई ना कोई एक सेफ कंपाउंड चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा हील करना है, पोजीशन बनानी है और अपनी गनों को प्रॉपर रिलोड एंड चेक करना है। और हाँ, इनको एक प्रॉपर कंपाउंड मिल चुका है छोटा सा, जहाँ पे ये ईजिली अपने आप को सब कुछ ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये भी एकदम जोन के पास ही है, तो इनको एक आगे जाके एक और अच्छी पोजीशन चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि अगला जोन काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने वाला है। Right, and unfortunately out in the open, outside the zone is team number 4, barely trying to make it alive. They will have to consume a lot of their heals, and team number 16 are going to be waiting for them just inside the zone. But team number 16 also is not safe, because you see, with so many people around, you are not safe. Every angle that you take, you are sacrificing one angle for the other, and you can never have total cover protection, because if you do, then you won't be able to shoot out and you will be just a sitting duck. You don't want to be a sitting duck, my friend. बिल्कुल, अगर बात करें टीम नंबर 12 की, तो ये एकदम ही सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके आसपास भी कई सारी टीम्स देखने को मिल रही हैं और लेकिन इनको जो जोन मिला है या इनका कंपाउंड है ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है, ये एकदम ही जोन के अंदर हैं और इनके पास अच्छा खासा कवर है, तो ये ईजी यहाँ पे अपने लिए फाइट ले सकते हैं और अपनी आगने वाली टीम के लिए तो काफ़ी बड़ा खतरा है ये। And talking about the zone has claimed at least 3 lives. If you look at the play zone, the kill feed, the play zone has claimed at least 3 kills so far, and that's perhaps more than some of the players in the chat. So that is unfortunate to see. I mean, you have such a big circle, but no area is safe, and team number 12 is perhaps the only one who has good positioning right now. They are inside the zone. Not many people can say that for themselves, and perhaps this team is what we have to look out for. Well, talking about team number 12, team number 12, LDER has team number 11 who's just pushed into their home, and you don't want somebody invading your home, especially with guns like that. बिल्कुल, और यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा ग्रेनेड मिला, लेकिन पीछे से ही टीम नंबर 12 के प्लेयर आए, उन यहाँ पे नॉक किया, फिनिश किया और ये टीम यहाँ पे फिनिश हो गई है काफ़ी ज़्यादा। Okay, so now when you look at team number 12 is basically out in the open. They're on top of the house, and we see team number 12 versus team number 3, roof to roof fight. But team number 3 isn't going to be that lucky, because they do have team number 17 in Adasia with some SMGs taking long range fights, and team number 3 unfortunately will have to say bye-bye to one of the players.
और यहाँ से अगर बात करें प्ले जोन की, तो प्ले जोन ने एक प्लेयर को और खा लिया है। तो प्ले जोन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है अगर आप प्ले जोन से नहीं बच सकते। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि SSQ की जो टीम है वो जोन के एकदम ही बाहर खेल रही है। भाई काफ़ी ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है ऐसे खेलने के लिए, इतना ज़्यादा पैसिव खेलने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। I think at this point it is less about how daring they are to play outside the zone, team number 18 SSQ, but more about they can't get in even if they want to, because I think he's in the warehouse and there's a vehicle there, but the vehicle seems to be trapped and he can't go outside because, he can't go inside the zone because it's going to be really, really biting him. And perhaps he does not have the heals for that. Let's see if he does have the heals. Maybe he will have to go for a heal battle, and we see that he has 7 bandages and 3 first aid kits. That is going to be of very less use. और इनके पास काफ़ी ज़्यादा कैश दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टाइम समाप्त हो गया है अपने टीममेट को बुलाने का। और ये अकेले प्लेयर है, मुझे लगता है यही रीज़न है कि ये इतना पैसिव खेल रहे हैं, क्योंकि अकेले कहीं पे घुसना और अकेले 1v4 करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। लूट तो काफ़ी अच्छी है इनके पास, बट अब ये स्मोक करके आगे जाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि आगे कैसा इनका सफ़र रहता है, क्योंकि आगे जाना खतरे की घंटी है। चारों तरफ प्लेयर हैं, अगर अकेले इनको जाना है, हल्का से अगर इस एक्सपोज हुए तो इनकी तो यहाँ पे बच जाने वाली है। And we see team number 17 has 2 players remaining. It's going to be really difficult for them because he's still out in the open. Team number 12 with that monopoly on that house. They were sharing it on rent with another team, but they recently just made them evacuate the home. Now it's just theirs. अगर हम बात करें यहाँ पे टीम नंबर 17 के वाइल्ड यार्क के, तो इन्होंने स्पॉट कर लिया है टीम नंबर 18 के SSQ के जो आखिरी प्लेयर बचे थे, उनको क्लियरली स्पॉट कर लिया, उन्होंने स्मोक किया है, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी नजरें बनाई हुई है। और साथ में टीम नंबर 12 को भी स्पॉट किया और यहाँ पे एक प्लेयर को भी नॉक कर दिया है। So far we have 5 people in the game. Another team number 12 has, well, now it's truly टीम नंबर 18 के प्लेयर यहाँ पे जोन के अंदर ही आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वाइल्ड यार के द्वारा फिनिश हो गए। और साथ में ये लकड़ी को शायद तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से वॉल बैंक देने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे वो हल्की से उनकी खोपड़ी दिखे और पार्ट से नॉक दिया। तो वाइल्ड यार का तो काफ़ी अच्छा गेम प्ले हम लोगों को देखने को मिल रहा है। Wild Yarick and this person, his teammate, his name is Machalu versus Harper and Rose. So let's see if Harper and Rose are able to do something at this moment. I mean, it's a very good try to get that molly across, but unfortunately the angle did not allow it. Let's see if they are able to do something. They feel very cornered. One good grenade can actually do the deed, but I don't think that team number 17 has any grenades left. Well, they did, but well, they're not able to put it to good use. The circle is closing in. They will run out of options at this point, and I think yes, it is winner chicken dinner for team number 17. They are your winners for the first match today. Team Wild with 9 kills in total, and team Bro with 8 kills in total with second position. वाइल्ड यार का काफ़ी अच्छा गेम प्ले हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। टीम नंबर 17 #1 आई है और विद 9 किल्स। टीम नंबर 12 8 किल के साथ यहाँ पे है। और टीम नंबर 3 की बात करें तो वो है SSQ, जिसका आखिरी प्लेयर वाइल्ड यार के द्वारा ही मारा गया था। यहाँ पे 8 किल के साथ वो टीम आई है। तो इन टीम्स का काफ़ी अच्छा शानदार प्रदर्शन रहा है। अगर बात करें किल्स के मामले में तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था। सो ये था गेम गाइज। हम लोग आपको मिलते हैं 5 मिनट के बाद। And guys, if you look at team number 13, who has position number 6, they got 16 kills, which is perhaps more than any other team in this match. And let me break it down for you. So AWK Uberis, I'm sorry man if I butchered your name again. So it is Kuberis. He got 5 kills. His teammate Skiford with 2 kills, Ethereal with 5 kills, and Default PUBG with 4 kills. So this team perhaps has scored the most in this match. Let's see if they're able to continue this performance later on as well. Again, guys, the caster's desk will be taking a 5-minute break because this is the first time that we are trying to do this together in this format. It's a little challenging, but we will try to bring out the best in the game for you guys. So stay tuned, get some popcorn, and hold on, enjoy the match while it happens.
So, guys, welcome back. We are starting with our second match, and this one will be held in Troy. And Troy is really special for me because we have seen this map being played so many times by the Korean teams in the Korean tournament. So, what happened in the Korean tournament is that we saw most of the teams actually going for the Volta and M249 or Volta and DP. Mm, You can just call it a meta at this point because everyone was doing it, and the reason that was so popular at the time was because the Volta is actually very fast in the pickup. Unfortunately, you don't see that in, I won't say unfortunately, but you don't see that in the other map, Erangel, and that is because Dacia and the UAZ are actually very slow in comparison to the Volta. The Volta is super fast, and there's lots of vehicles available throughout the map, so even if you run out of battery you can actually just go for another one. But if you are closing in, if the zone's closing in and you want to be in, if you want to be huddled at one point, then definitely you have to take great care because the thing can run out of battery pretty quick. Now the plane has taken off. Let's look at the flight path, and you see trailer park. It goes from trailer park to exhibit hall to Cornwall to city hall. So let's see what exactly happens here. Should be really fun to watch. बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ पे प्लेन पाथ की तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टीमें चेस्टर, मॉल, कॉर्नवॉल और एग्जिबिट हॉल जाने वाली हैं क्योंकि बीच में यही पाथ पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ टीमें ऐसी भी होंगी जो थोड़ा सा पैसिव खेलने की कोशिश करेंगी, तो वो पोर्ट साइड, बे एरिया, लैब साइड जाएंगी, गैरिसन भी जा सकती हैं। तो यहाँ पे कई सारी हमको टीमें ऐसी मिलती हैं जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फाइट लेना चाहती हैं, वो तुरंत एकदम मिडिल ऑफ द मैप उतरती हैं। कुछ लूट करके अच्छा खेलना चाहती हैं तो वो दूसरे मैप के अदर साइड में भी जाने की कोशिश करती हैं। So guys, this is exactly what happened even in the last match with drop locations, is that people always went for those side areas which are supposed to be unpopular, but the popular ones just never got the love that they deserved. So exhibit hall we see is completely empty, whereas you see team VG's player going at the very north of the map into an unnamed lowly city. It just, poor exhibit hall. It has one of the best loots in the game, but it just is not getting any love. Chester has two teams, so that has potential for a drop clash. Let's see Sigma what other places have more than one teams. Perhaps we shall be able to see some action in graveyard, but I don't think that seems likely at this point because the other teams, Team CM and Team AW, I believe Team AW it is, so they have opted to not go for it. But if you look at the mall area, the mall seems very interesting at this point because Team 14 has already lost a member, and this is less than 2 minutes of the game. They've already lost one person. They are currently engaged in this very intense situation where any party can deal a finishing blow to the other, and it can take perhaps less than 2 minutes. If you look at Team 20, they just have the top rooftop. The rooftop is not very loot heavy. There's a lot of angles where they have to watch out from. Otherwise, Team 14, who is just happily looting away at this point, can surprise them and perhaps get a single frag or maybe even two. Who knows? So you see Team number 14's Cosmic Lava just going upstairs. Maybe he's going to go for something, but it doesn't seem likely at this point. What do you think, Sigma, is going to happen here? बिल्कुल, यहाँ पे टीम नंबर 14 और टीम नंबर 20 आपस में यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। दोनों एक साथ उतरे हैं और टीम नंबर 14 ने तो अपना एक मेंबर भी यहाँ पे खो दिया है, तो इनको तो यहाँ पे डबल मेहनत करने वाली है और ये एकदम ही उनके नीचे ही जस्ट लूट कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे नज़र बनाए हुए हैं। टीम नंबर 20 चाहती है कि यहाँ पे ये ऊपर की साइड चढ़े, रस करे तो वो उनको मारे, और ये भी इंतज़ार में बैठे हैं कि टीम नंबर 20 नीचे आए तो उनके साइड फाइट ली जाए। लेकिन अगर बात करें इनके पास लूट की, तो इनके पास अभी ज़्यादा लूट भी नहीं है और ना ज़्यादा इनके पास कैश है, तो इनको अभी कैश भी इकट्ठे करने, अपने टीममेट को रिवाइव करना है और साथ ही साथ इनको ध्यान देना है कि टीम नंबर 20 इनके पास ही नज़र बनाए बैठी है। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो इनकी पिटाई हो सकती है। और दूसरी चीज़, ये एकदम टीपीपी लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करना चाहेंगे ये लोग। Clava, by the way, if you look at Cosmic's Clava, do you know what he has been doing so far? He's been rolling around instead of walking, and that is actually what a lot of people consider is a good move, because you assume that the enemy players can't really see your footsteps if you're rolling instead of walking, because it's just something intuitive. But the truth is, and this has been checked out, if you roll
the enemy will still see your footprint. So it's not like if you roll, you have any advantage. It's just Yeah. you may be popping up in the screen a little quicker, and I think we might see Clava going for a gunfight. He is switching from FPP to TPP and back to FPP. So maybe they are pushing, and they may be hoping that they get some kills in there. What do you think, Sigma? Do you think Team 14 with 3 players is going to get the drop on Team 20? Because you see Team 20's Mania is actually on the 3rd floor, the same floor as Team 14. Maybe he is out here to collect some information so that he can tell his teammates that, hey, the fight is up, we have to start participating. बिल्कुल, अगर बात करें टीम नंबर 14 के कॉस्मिक स्क्वायर की, तो ये यहाँ पे एक ही पत्थर के पास फुल टीपीपी ले रहे हैं। यहाँ से ये लोग जीने की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ से कोई प्लेयर आ ना जाए, लेकिन ये क्या देख रहे हैं हम, कॉस्मिक क्लावा भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं और यहाँ पे टीम नंबर 14 के प्लेयर नंबर 4 यहाँ पे ग्रेनेड करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने टीममेट को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये अपनी टीम के आखिरी प्लेयर बचे हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में ये टीम लग रही है। क्या लगता है आपको, लाइट ये सर्वाइव करेगी या नहीं? I think we may actually see our first team dropping out of the game at this point, because unless he decides to go away, Team 20 should have a pretty good grasp on what's going on, because at this point, teams have good communications. They should tell each other that, hey, we've already gotten 2-3 kills at this point. Maybe we should just go for the next one. And maybe that's what we are going to see here. So Mania is trying to collect information while Froze here is trying to give him some sort of a cover. And maybe when they coordinate, Skewer will go down. I would be very scared if I was Skewer at this point, because this is, yeah, definitely. You see the bullets coming in. He is panicking at this moment. He's trying to go from left to right, trying to find the right angle to defend himself. He's pre-firing just in case somebody decides to push. And yeah, all the 4 players are coming in. It does not look good for him. And there you go. Team Cosmic has been eliminated from this match with 0 kills, I believe, at this point. PCR with 4 kills to the name so early in the game. It's looking very good for them at this point, because Maul again has really good loot potential. So even if they had lost someone, it would have been a worthwhile trade. यस और टीम नंबर 20 ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और अब बस अपनी जगह की ये अकेले बचे हुए हैं। बाकी अदर टीमों की तरफ हम लोग देखते हैं टीम नंबर 16 यहाँ पे क्या कर रही है और उनको देखते हैं। इनके पास अगर हम देखें तो काफ़ी सारी टीमें इनके आसपास दिख रही हैं और पिछले ही मैच की तरह ये लोग फिर से एकदम ही किनारे उतरे हैं। जैसा कि पिछला गेम हम लोगों को इरेंगल में देखने को मिला कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा पैसिव खेलने में बिलीव रखते हैं और आखिरी तक गेम में जाने की कोशिश करते हैं, तो एकदम ही किनारे उतरे और यहाँ पे इन लोग काफ़ी लूट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जोन के साथ ही चलने की कोशिश करेंगे। Now, if you look at team number 19's Dr. Lonelli, well, he is in a house where an enemy is up top and the enemy is waiting for him. So, Bro Ruse and Dr. Leonelli, I'm sorry if I butchered your name there, buddy. Leonelli is, yeah, well, really good AK spray. Rose goes down. Team Bro may want to avoid this fight as of this moment, because LDER, perhaps the solo member of Bro in the vicinity, maybe he should just go for a save or a very safe gameplay, because you see what Bro did in the last game as well is they went for a 2-2 split and they just went to these low. Wow. LDER goes down to Dr. Leonelli. Leonelli, I believe, is at 2 points at this point, so maybe we can see this team again with really good kills. What do you think? Do you think this team is going to perform well again? Because last match we did see them with quite a few kills. Do you think they'll be able to get some good kills here again, Sigma? बिल्कुल, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इनका पिछला गेम भी काफ़ी अच्छा गया और इस गेम की परफॉर्मेंस भी इनकी काफ़ी अच्छी दिख रही है। जैसा कि अभी इनके सामने जो टीम थी उसको काफ़ी अच्छे से इन्होंने उनके साथ फाइट ली और उनको किल किया, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये टीम भी हम लोगों को टॉप 5 में इस मैच में देखने को मिलेगी। And if you look at team number 10, then you look at the map and you look at the way that they're going forward with their positioning and everything. Team number 10 has 3 players moving together in 3 different vehicles, and one of their members is actually going forward with quite a bit of a distance, maybe even 500 meters. I believe that's the scout, and team 80 is just following behind him. In the meantime, if you look at the kill feed, you will see that team AW has been going for some kills. Let's look at team AW and see what they are up to at this point.
बिल्कुल, अगर बात करें टीम नंबर 10 की तो इनके सारे के सारे प्लेयर अलग-अलग चल रहे हैं, कोई भी एक साथ यहाँ पे नहीं चल रहा है, तो ये एक प्रोबेबली एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी प्लेयर इनका एक साथ नहीं है। अगर मैं ये सोचूँ कि अगर कोई एक टीम गाड़ी लेके इनके साथ फाइट लेती है, तो इनके लिए काफ़ी किसी भी प्लेयर के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है ये एक अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहे हों। सारे के सारे प्लेयर स्प्लिट होके मैप में हम लोगों को गाड़ी दौड़ाते हुए दिख रहे हैं। Do you know what this reminds me of? It reminds me of Team Diode in the first match that they played. It was an Erangel, and I distinctly remember because I was casting at the time that I remember watching them just take 4 different vehicles and try to go for that. I don't know. It's a very safe play. I don't really understand why would someone do that. I don't know why a team would do that. It does not make a lot of sense. Maybe they just want to run away and play extremely safe. But other than that, I don't see the point to it. Maybe someone in the chat can help me out. Can someone in the chat tell me why would teams go for this? Or Sigma, why do you think a team would do this? मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे प्लेयर अलग-अलग खेलेंगे। ये सारे के सारे पूरे मैप में घूम के अलग-अलग प्लेयर की शायद पोजीशन जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से प्लेयर कहाँ से आएँगे, और साथ में ये कि चारों प्लेयर अपना एक कोई अलग सा एक स्पॉट बना लिए होंगे कि चारों अलग-अलग गाड़ी से चलते हैं और हम इस जगह पे मिलेंगे, और साथ में ये भी जानकारी लेके आएँगे कि कौन प्लेयर कहाँ पे मिलेंगे, कौन सी टीम कहाँ पे है और कितने-कितने प्लेयर्स हैं, क्या चल रहा है गेम में। सारी जानकारी लेके एक अलग सी जगह पे चारों एक साथ मिल जाएँगे। And if you look at Vermont, Vermont looks pretty densely populated because it has 12 players right now, if I'm not mistaken. And 12 players can probably accommodate Vermont, but just like a pressure cooker, the steam fills in. And at one point, we are going to hear a loud boom if the pressure is not taken off at the right point. So what do you think is going to happen in Vermont? Do you think we may have the last zone somewhere around Vermont? Because I would love to see it. Because Vermont has one of the most versatile buildings with cover and such. So what do you think, Sigma, is going to happen here? बिल्कुल, वर्मोंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेयर से भरा हुआ है और साथ में ही मुझे लगता है कि जोन भी यहीं पे, अगला जोन यहीं पे ही मुझे लगता है बनेगा, और साथ में ही बहुत ज़्यादा फाइट देखने को मिलेगी। अगर देखें आसपास तो कई सारी टीमें आसपास हैं। अगर कोई एक घर छोड़ के दूसरे घर पे जाता है तो उनको किसी अलग प्लेयर का बंदा यहाँ पे हाई करता हुआ मिलेगा और उनकी फाइट स्टार्ट होगी। बात करें टीम नंबर 16 के सामने यहाँ पे टीम नंबर 11 दिख रही है, साइड में टीम नंबर 19 है, आगे पीछे भी, पीछे की साइड से भी गाड़ी से कुछ प्लेयर हम लोगों को आते हुए दिखाई दे रहे हैं। Well, why don't you tell me more about Team 16 and how DWEN1DE is actually going for Team number 13's car in there? That looks very easy for him to get a few knocks, but unfortunately, even with the SKS and 6X, he's unable to get any kill there. बिल्कुल, और यहाँ पे स्केच से ये काफ़ी ज़्यादा एम करने की कोशिश कर रहे हैं। टीम नंबर 13 के प्लेयर के पास कोई भी यहाँ पे उनके पास कंपाउंड नहीं है, वो गाड़ी से ही चल रहे हैं और सारी नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। Honestly though, I mean, yeah, we can talk about other teams, but what did EN1DE here do? Team number 16's player number 1, he had the whole 2 players in front of him. The car was stopped, it was stationary. He just couldn't get the kills done. I don't know why that happened, and perhaps he would be, just beating himself up over it, but somehow that is not the performance that you expect to see at from teams at this stage. They want to go for qualifiers, they want to play competitively, but if you cannot get the drop on stationary players, well then maybe you should practice some more. बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ पे टीम नंबर 20 की, तो वो तो एकदम ही जोन के किनारे पानी के बगल में यहाँ पे वो देखे जा सकते हैं, बीच साइड का एरिया का मज़ा लेते हुए दिख रहे हैं, और ये भी एकदम ही पैसिव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारी टीमें हम लोगों को ऐसे ही मिली है शुरुआत से कि वो काफ़ी ज़्यादा पैसिव खेलने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग एग्रेसिव में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। वो सोचते हैं कि लास्ट जोन में अभी तक सर्वाइवल पॉइंट कुछ कलेक्ट कर लेते हैं, साथ में ही लास्ट में कुछ हम लोग यहाँ पे फाइट बाद में ले लिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि तुम लोग देखोगे कोई भी इतना किनारे आने की कोशिश नहीं करता जितना यहाँ पे हम लोगों को टीम नंबर 20 के सारे प्लेयर यहाँ पे लूट करते हुए और अपना ये हॉट ड्रॉप एरिया या अपना पूरा का पूरा एक कैंप बना के बैठे हुए हैं। Hello? Bro, I think your voice cut out for some reason. Okay, no problem. So are you good there? Is your equipment good there, buddy? All right. Well, if you look at team number, this is team number 10, and team number 10 is playing quite safe, but they do not know that they are actually being watched from there behind, and maybe
we will be able to see some long range or medium range, as you'd call it at this range. So some medium range fighting. But here's the thing about medium range fighting and long range fights: you usually cannot get the kills, and that's because, oh, what do we see? Hold on to that thought. Team number 10, AT, ID, ED, MWP. Wow. Wait, did you check that? Did you see Supreme got so many frag kills, but at the same time, he actually knocked himself out too in the process? I don't know how that happens, but he did do that. I think that was like four kills, but one of them was himself. That is so crazy. What do you think, Sigma? Have you ever seen something like that before? You see one person knock out almost 3 people, but at the same time he also gets himself. Maybe it was a suicide grenade. Well, I don't know what happened there. That was definitely something that I would like to see again. बिल्कुल। और यहाँ पे अगर बात करें टीम नंबर 12 की, तो इनके सामने कई सारे प्लेयर दिखे और यहाँ पे टीम नंबर 20 की एक गाड़ी भी जाती हुई दिखाई दे रही है और ये अपने सामने की टीम्स की गाड़ियाँ भी फोड़ने में बिजी हैं कि वो निकलने ना पाएँ। और साथ में ये 6x से यहाँ पे टैप का शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन बना के बैठी है। हाई ग्राउंड एडवांटेज अपने घर की छत पे बैठकर पूरी चारों तरफ नज़र रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। So now we are looking at team number 13, and they just got another person out in the open with the Mini 14. The Mini 14 is actually a pretty good gun. I feel it is pretty underrated because you see, with the Mini 14, you have very less recoil, even at longer ranges. Some people might even call it an easy gun, and you know exactly who you are, my friend, because there's a person who called it the easy gun, and it was just so hilarious. I think we just had to bring it up. And again, with team AW, team AW actually got one of their teammates with a frag grenade. So what are we seeing here? We're seeing teams killing their own teammates. We see a person getting multiple people, but even himself in the process. So how does this all happen? What do you think, Sigma? Do you think that grenades are something that these players should work on, their grenading skills? Because it seems like they just can't get enough of killing their own teammates. बिल्कुल ग्रेनेड पे वर्क करना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग हैं ग्रेनेड चलाते हैं और उसके काउंटडाउन पे ध्यान नहीं देते। मुझे भी लगता है उन लोगों ने अपने काउंटडाउन पे ध्यान नहीं दिया और इनको मुझे लगता है कि थोड़ी सी इनको अपने लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि अपने टीममेट को मारना मतलब बहुत ही गलत काम हो जाता है और ऐसी चीज़ों पे इनको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। Right, and looking at Vermont, you have a very tense situation with team number 3, that is KYS, and for stream's sake, for monetization's sake, we won't say what their team name is because it's not the best name out there. With team number 11, they are just holding out. It is the waiting game. The first player to move loses. And I feel that we have a drone here because I do hear the buzzing, but unfortunately the drone will be unable to spot anyone out. Team number 3 has to be very careful. They are only with 3 players here. Let's see if they have the cash to call in another one. Unfortunately, combined, they have somewhere just about 650 credits. That's almost half, and that's nowhere near enough for them to go for a third person. So they may actually have to go for the fight here. Maybe they'll be able to get AW out, but the chances of them succeeding look pretty slim. बिल्कुल, अगर अपने टीममेट को यहाँ पे अगर इनको रिवाइव करना है तो उनको ज़रूर से फाइट लेनी पड़ेगी क्योंकि अब जोन इतना छोटा हो गया और सारी की सारी जगह लूटेड हैं तो कैश तो कहीं पे मिलने वाला है नहीं है। और ऐसी जगह पे अगर आप अपने टीममेट को रिवाइव करना चाहते हैं या अपने टीममेट के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, ग्रीन फेयर गन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जो चीज़ें होती हैं वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइट लें और उनके कैश लूटे, पैसा लें और अपने टीममेट को रिवाइव कर सकते हैं। वेल, ये लोग आके जोन में जाने की कोशिश करेंगे और जोन में शायद ये हैं यहाँ पे, लेकिन इनकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज लग रही है तो इनको एक नई गाड़ी की भी ज़रूरत होगी। Definitely. I mean, look at team number 8 and team number 4. Team number 4 is just running away from team 8 and SSQ. What do you think? Do you think they'll be able to take the fight? Do you think they'll go for it? Because they just stopped out there right in the middle of nowhere with the buggy. And I really like this electric buggy. I'm not going to lie, Sigma. I really, really love it because it just has a very different feel to it. I mean, at least in the petrol version, your teammate is, just exposed. He's just sitting there like an antenna, like a magnet for attracting bullets. But this one is sort of different. I just feel it is much better for your teammate. So definitely it's something that I would prefer over the petrol one. Also looking at team number 4, I believe he's the last person remaining from his team. Is he AFK or is he just taking a third person's perspective behind the boat? Because that is a really smart play.
If people shoot at him, he can just go underwater. But he also has solid cover here. So, do you think this is a good place for him to be, Sigma? Team बिल्कुल number 4? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम नंबर 4 का प्लेयर यहाँ पे, इनकी टीम नंबर 4 के प्लेयर सारे यहाँ पे किल हो चुके हैं, लेकिन शायद इसके लिए उन लोगों ने ग्रीन फ्लेयर गन चला दी थी, जिससे वो यहाँ आके छुपा हुआ है और इसको कोई भी जगह मिल नहीं रही है निकलने की। तो मुझे लगता है कि इसके लिए ज़्यादा बेटर होगा, और जैसा इसने सोचा भी होगा कि वो अपने टीममेट के लिए, अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल पॉइंट इकट्ठा कर ले, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लूट करने का कोई भी एरिया नहीं दिख रहा है, और साथ में सामने टीम नंबर 18 के प्लेयर भी दिख रहे हैं। तो अगर ये पानी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली ये मारा जाएगा। तो ये बोट के पीछे रहकर अपनी टीम के लिए सर्वाइवल पॉइंट इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ये जोन के अंदर है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा सर्वाइवल पॉइंट मिल सकते हैं। And if you look at team number 5, Team 99 has been going at it from the very beginning. They have 6 kills to their name, and half of them is residing with Player. Player is actually really good with the MK. I believe he's the one with the MK. Not sure. But team number 99 does have a player with the MK, and they are really good at it because we've seen some kills coming in from their side. Again, with the Tommy gun, Thompson has been a crowd favorite. Again, 9 kills now, getting the drop on Team Bro. Team Bro has been playing relatively well thus far, but they were just caught out in the open. It's unfortunate when that happens, and perhaps we will see the drone coming in. Will Team 5 go for the kill? Because at this point, with 9 kills to the name, they should feel pretty secure. They should try to go for it. And Team 11 does spot out Team number 5. Do you think that we will see another long range fight, or do you think Team 5 will actually rush to them? What do you think is going to happen here, Sigma? बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम सामने देखें तो टीम नंबर 5 के सामने टीम नंबर 10 का आखिरी प्लेयर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे मारा जाएगा। वो भी पानी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाँ, वो बोट के पीछे चला गया और बच गया है। और इन्हीं के सामने देखा गया टीम नंबर 5 के पेपर 30 के सामने, तो यहाँ पे इनके पीछे भी प्लेयर हैं, आगे भी प्लेयर है, तो इनको काफ़ी बच के खेलना पड़ेगा। और टीम नंबर 99 के यहाँ पे 3 नंबर का प्लेयर नॉक फिनिश भी हो चुका है। Right, and team number 99, here's the thing about them. They usually went for like really good positioning and such, but at this point they should not destroy the boat. I think Sigma, it would be a bad decision to destroy the boat. They should probably just leave it at very low HP, but then again, you need some sort of experience to know exactly when to start shooting or when to stop. You need a lot of team coordination for that as well. The reason for that is because now they've provided them with a permanent cover. Right, this boat is not going anywhere. It's not gonna damage them. It's just really good cover. But at this point, since they are, oh wow, what do we see? See, I told you, Team 99, thirsty with that MK14, gets a knockdown. Do you think they'll go for it? Perhaps they should. I mean, even if they're at a 1% disadvantage, I feel that this team just wants to go for different kills. They perhaps don't care so much about their position as of yet. They think they'll be able to cover up the distance, even if they lose at this point, with more kills, and that's perhaps something that could work out given how aggressive they are and how successful they have been. Yes, this team is ये टीम बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव खेल रही है। ये मतलब किसी को भी देखती है तो बस अगर इसकी नज़र में कोई भी आया तो वो बच नहीं सकता है। ये सीधे रस कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी तक देखा 2 से 3 टीमें हम लोगों को काफ़ी पैसिव देखने को मिली और साथ में काफ़ी एग्रेसिव। लेकिन ये क्या देखने को मिल रहा है, टीम नंबर 5 के प्लेयर यहाँ पे नॉक हुए, लेकिन यहाँ पे फिनिश भी हो गया, लेकिन उनकी टीम ने उनको बचा भी लिया है। वेल, बचाया नहीं है, टीम 11 के प्लेयर को नॉक कर दिया है। वेल, इनके पास इतना कैश होगा कि ये अपने टीममेट को बचा सकते हैं। Hold on a second. Did we just see a squad wipe just like that? Did those people get wiped out all of a sudden? Even after they got 2 knocks, just one person, I think Smokey is the last person alive, and he revived both of his teammates. So now they actually, wow, Team 99 with such aggression, such passion, but they will still go down to Team number 11, who's just been passively playing. I mean, not so passively. Again, they have 9 kills as well. Wait. Did I just misread the situation? Team 11, 9 kills as well. 3 from just now. बिल्कुल, टीम नंबर 11 भी काफ़ी एग्रेसिव यहाँ पे देखने को मिल रही है, और साथ में वो उनकी नाव को भी फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके सामने जोन भी आ गया है, तो जल्दी से जल्दी इनको जोन भी जाना होगा। और इनको अगर देखें तो इनके पास लूट भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है, लेकिन जल्दी से जल्दी इनको जोन निकलना चाहिए। I mean, team number 11's Rasul just got knocked out once again because perhaps he couldn't heal in time, and it's just unfortunate when that happens. There's nothing you can do at this point, and I believe team number 10's last 2 players are just surviving
barely by the skin of the teeth. One of them goes down at this point, and it feels really bad being the last person alive from your team. There's a lot of hopes and responsibilities. There's lots of expectations. He is not in the zone, and perhaps he can just go for the drop that's right in front. Because here's the thing: in competitive arenas, right, people usually don't go for drops. They don't even check it because they just think that, hey, nobody's going to go for it. But if you end up going for the drop and you find a really good cover, well, then it's really good for you. I think Team 80 just died here. Yeah, they did get spotted out, and unfortunately, they did meet their demise. So we have one less team in the fray. We have less than 30 people right now, and the zone is currently extremely small. As I was telling you about earlier about the pressure cooker, this is the steam filling in at this point. वेल अगर बात करें यहाँ पे टीम नंबर 8 की, तो इन्होंने एक घर होल्ड करके रखा हुआ है और इनके सामने टीम नंबर 19 के प्लेयर दिख रहे हैं और ये अपनी गन से यहाँ पे स्नाइप करने की कोशिश करेंगे और इनके पास टॉमी गन भी है और एक अच्छा यहाँ पे होल्ड बना के रखा है, लेकिन आगे इनको जोन में भी जाना पड़ेगा और अलग अलग गाड़ी से जाना मतलब काफ़ी अच्छी एक स्ट्रेटजी लोग बना के रखते हैं। दो दो के पेयर में ये लोग स्प्लिट हो जाते हैं और आगे जोन में ये एक अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं। Talking about team DWD with 2 people alive, player team number 16 with 2 people alive. It looks quite good for them because they're in the center of the zone with just a shot to the name and a smoke, so people know where they are, exactly where they are. With team number 13 and team number 1 going at it, maybe we'll see team number 1 actually go. Maybe they'll win this one. Then again, 13, 8, 1. All of these people just in a free for all at this point. Who knows who's gonna win? We'll only see the conclusion once all of it ends, but it's going to be really interesting to watch. बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर बात करें टीम नंबर 16 की, तो DW एंजल्स की बात करें तो इनके सामने स्मोक में ये फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, अंधा फायर दे रहे हैं कि कोई ना कोई बुलेट तो यार लग ही जानी चाहिए, इनको मार देते हैं और ड्रॉप को वो लोग कवर ले रहे हैं, लेकिन ये क्या है, वो एक प्लेयर को नॉक कर जाते हैं और दूसरे को भी नॉक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो बच गया है एक बुलेट से। उसने स्मोक कर दिया अपने टीममेट को बचाने के लिए और ये ड्रॉप के सामने तो ये मार नहीं पाएंगे, यहाँ पे बचा लेंगे और इनके पास काफ़ी अच्छा कवर देखने को मिल रहा है। सामने वाली टीम नंबर 10 के पास कोई भी कवर नहीं है, लेकिन ये क्या, ये तगड़ा सा यहाँ पे इनको SLR का शॉट पड़ता है और ये नॉक हो गए हैं। काफ़ी इनको समझदारी से काम लेना चाहिए क्योंकि इनके पास भी काफ़ी छोटा सा ये घर है और इनके सामने भी काफ़ी ज़्यादा प्लेयर हैं, तो वो भी और इनको भी अभी निकलना है आगे। अगर वो इनकी गाड़ी फोड़ देते तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो सकती है। वेल ये अगर बात देखें तो ये जोन के अंदर ही दिखाई दे रहे हैं, तो अभी तो इनके लिए कोई भी मुसीबत नहीं होने वाली है। अगर बात करें यहाँ पे जोन की, तो जोन के अंदर सिर्फ हमको एक ही टीम देखने को मिल जाती है, बाकी 6 से 7 टीमें सारी की सारी बाहर देखने को मिल रही हैं। कोई भी अभी जोन के अंदर आना नहीं चाहता क्योंकि सबको पता है यार जोन ज़्यादा तो दूर है नहीं है, इसी हम लोग जोन के अंदर जा सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ टीम नंबर 16, ये क्या हम बार बार देख रहे हैं कि टीम नंबर 16 के फर्स्ट प्लेयर बार बार नॉक हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, तो अभी इनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। Well, on the other side of the map, we see team number 8, and team number 8, it's really interesting because I think almost all of their team got knocked out. I mean, 3 of their 4 players got knocked out twice, and they still are in the game. They are outside the zone. They will have to rush in. 2 of them might get knocked out, and as we see, 2 of them did get knocked out. It's going to be really difficult for team number 8 to actually survive. I mean, they were in dire straits, but they did turn out to be really lucky. As far as the luck factor goes, they did turn out to be really good for them. Again, luck can only take you so far. It's time for them to perform. ओके, सो यहाँ पे ये टीम भी एलिमिनेट होती हुई टीम नंबर 8 काफ़ी ख़राब रहा, बार बार नॉक हो रहे थे इनके प्लेयर। चलो मूव करते हैं यहाँ पे हम लोग टीम नंबर 19 की तरफ। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, टीम नंबर 19 और 11 में काफ़ी ज़्यादा भिड़न देखने को मिल रही है। टीम नंबर के 11 के प्लेयर दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड हैं और वो लोग बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक प्लेयर नॉक होता हुआ DR माइनस की गन से, इनकी UMP से कोई नहीं बच पाया और एक प्लेयर अभी भी स्मोक में है, तो ये ज़रूर से उसको नॉक ऑन फिनिश करने की कोशिश करेंगे और टीम नंबर को उसको भी एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। टीम नंबर 11 काफ़ी ज़्यादा खतरे के साथ दिख रही है। लेट्स सी, उनके तरफ एक बार रुक करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे इनके अकेला प्लेयर बचा है। क्या लगता है लाइट, ये सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? It's going to be really difficult for team number 11 to survive here because he has 2 teams just watching him like the hawk watches his prey. On the other side of the map, though, we see team number 17 alive with team number 19's 4 players.
how many players does team number 17 have? It has 3 players, and well, make it 2 at this point, because I think he got knocked out. No, wait, he didn't. My bad. My bad. So team number 17 has 3 players, 19 with 4, and team 11 with just 1 player. Let's see if team number 19 and team number 17 go for a fight, and team number 11, that is AW, may just go for the second position. I mean, it looks nigh impossible for him at this point to go for the first position, but a man can hope, a man can dream. Then again, Lionelli will be getting his dreams crushed at this point because he gets knocked out, but I think there is still a chance that he will get revived by his friend Fake Sonnet. What do you think is going to happen here further, Sigma? अगर अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे सबसे मजबूत टीम इतनी टाइम पे तो टीम नंबर 19 ही लग रही है, क्योंकि ये पूरी 4 मैन स्क्वाड टीम है। बाकी की टीम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, किसके सारे प्लेयर्स नहीं हैं। वेल, एक प्लेयर को AW के प्लेयर को जोन यहाँ पे निकलता हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ टोटल 3 ही टीम हम लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन ये क्या, GR के द्रेल दोबारा नॉक हो चुके हैं और यहाँ पे उनको फिर से रिवाइव किया जाएगा। वेल, टीम नंबर 19 काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ पे 2 ही बंदे देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे अगर बात करें सामने वाली टीम नंबर 17 के, उनके भी एक प्लेयर यहाँ पे हम लोगों को नॉक देखने को मिल रहे हैं। और लोनली यहाँ पे, ओ माय गॉड, इनका कितना अच्छा यहाँ पे क्लच देखने को मिला। ईजी यहाँ पे चिकन डिनर हो गया है। Well, as predicted, team number 19 goes for the chicken dinner. Let's look at the results and see how many kills they got. So team number 19, DR with 13 kills. That is your winner for this match. You have team number 2, position 2, that is team 17, Wild with 7 kills. Position 3, team 11 with 11 kills. Nice. And team 4, that is the position 4 with team 1, that is with 4 kills. But I do feel that we should have more high ranking teams in here, especially with position 12, that is team number 5, 99 with 10 kills. So I think the one knock that they got up on the rooftop, they did confirm that before they died. So that's definitely going to get them some points. It's not going to get them up there with the top teams, especially because they didn't get the positional points. So perhaps it's going to be a little difficult for them to compete for the top spot. But team 19, DR, with 13 finishes to their name and the first position, are going to perhaps take a rocket step to the top. What do you think, Sigma? Do you think that these teams will continue to perform in this way? Because Erangel and Troy are very different maps. And let's see how they perform in match number 3 that is coming up. That is Erangel 2051. बिल्कुल, टीम नंबर 19 का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। अगर बात करें, स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छा खेले और लास्ट जोन में भी ये 4 मैन के साथ ही थे। वेल, इनका एक प्लेयर बार बार नॉक हो रहा था, लेकिन अपनी टीम को बचाते हुए साथ में दूसरे की टीम को खाते हुए जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला वो अलग ही था। अगर बात करें GR माइनस की, तो इनका गेम प्ले काफ़ी शानदार था। ये आगे रोड के आगे बढ़ के इनने अपनी टीम को काफ़ी ज़्यादा किल दिए हैं, अपनी टीम के लिए किल लिए हैं यहाँ पे। तो मतलब ये टीम काफी ज्यादा, इनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा था। At the same time, guys, remember what you're watching. You're watching Titan Gaming's international qualifiers for the other region. My name is Light. My YouTube channel is called Lightcast. So at this moment, what I'm doing is I am interviewing different teams as we go into the ROG tournament that is exclusive for India. So feel free to check out those teams, get to know who they are, and you will perhaps see a champion emerging from them. So remember those names, especially a few of them that I will not name. I know for a fact that they've been practicing really, really hard. They practice daily. They put in the hours. They've put in the, they've put in the grind. They've put in the blood, sweat, and tears. So definitely watch them, know how they play, because on the international scale, they will be your competition. So keep your enemies close, keep your friends close, keep your enemies closer. या बिल्कुल, हम लोगों को थोड़ा सा अभी ब्रेक की जरूरत है और नेक्स्ट मैच में मिलते हैं 5 मिनट के बाद।
So welcome back, guys. We are back to Erangel 2051 as promised, and we will be starting very soon when we have all of the players come in. Perhaps we are missing just one person here, and when those person, well, perhaps not. Team 15 only has one person here, so you have to watch out. Team 15 with one player in it, and Team 17 with two people. This is going to be very interesting because you never see these kind of things happen. But then again, it's the qualifiers, so you never know. There are some teams which are really, they're really serious about it, and some teams maybe they've just joined to get some experience. Nothing wrong with that. Nothing wrong with gaining more experience. It definitely tells you if you are compatible with each other. Well, if you look at it, Team 15 Wild do well. I won't say it because I perhaps won't be able to say it well. So Team Wild, perhaps. Wait, what do we see here? Team Wild has two teams. Perhaps that guy was just switching for the fun of it, and unfortunately he got stuck. Is this what we're seeing here? Sigma, look at Team 15 and Team 17. It's the same team, but one person was just playing around in the room. That's why you don't play around, man. That is definitely the reason you don't play around. Now, I don't know how they are going to coordinate. Perhaps, I mean, you can't even recruit at this point. It's just sad. Well, looking at the plane, the flight path is in front of our screens. Georgia Pole to Pochinki to Milta and Novo, of course. So, where do you think people are going to drop, Sigma? मुझे लगता है कि इस बार लोग यहाँ पे कुछ तो जार्जोपुल जाएंगे, पोचिंकी तो बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं, और नोवो रिपनोई, ये कुछ ऐसी जगह हैं जो लोग जाएंगे। और साथ में ही यहाँ पे मैंने, जैसा कि हम लोग पिछले बार से देखते हुए आए हैं, कि कुछ टीमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसिव खेलने की कोशिश करती हैं। तो अगर जो लोग ज़्यादा पैसिव में खेलना बिलीव रखते हैं तो वो लोग यहाँ पे मैप के एकदम कोने कोने जाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करे, अपने लिए अच्छी लूट ले और लास्ट जोन में फाइट लेने की कोशिश करेंगे। वेल, देखते हैं कि अदर टीम के प्लेयर्स, वेल अगर यहाँ पे देखें तो जॉर्जो साइड, हॉस्पिटल, इन साइड पे काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स उतर चुके हैं, और ये हमको लगता है काफ़ी सीरियस मूड में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। Yeah, and as I was telling you earlier about some locations which were supposed to be hot drops, excuse me, those locations just aren't as hot as you expect them to be. I mean, look at School, look at Prosok, those are practically untouched at this point, and this is quite unheard of. I mean, you know, generally what happens is, and I'll just tell you the fact here is, before a match begins, most teams, because they're from the same region, they fight against each other quite a bit. They're on friendly terms. It's one community. So what they do is they talk to each other and they figure out where the drop location of the other teams are, so that they can all get they can all get good loot, and they can perhaps avoid an early fight, so that all of them survive till the end, and then it's a fair fight. You know, nobody wants to die early in the game. It's just embarrassing. So let's see what happens. Maybe we'll get to see a lot of action, especially for team number wait, it's loading for myself. Hold on a second. So this is Bro, as I can see in the map, Bro Harper, which is from team number 12. He's out there alone, and around him is team number 20 PCR. This guy is alone. His friends are nowhere to be seen. Well, at least in the general vicinity of things. They're all in the hospital. So is he just collecting information? Maybe he's just a bait. The rest of his teammates actually collect good loot and then they rush over. It could be a very advanced strategy, but if he dies, it will all be for naught. So Harper has to be really confident in his skills, and also has to be really careful so as to not die, because if he does, then Team 12 will have to fall back. They will have no source of information, and they will have to waste another 1200 credits. वेल अगर हम मैप के साइड ध्यान दें लाइट, तो तुम जैसा कि देख सकते हो कि जो हमारा जोन बना है उसके अंदर सिर्फ एक ही टीम देखने को मिलती है। और अगर हम ज़्यादा ध्यान से देखें तो जॉर्जो की साइड अगर तुम देखने को पाओगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लेयर्स तुम लोगों को और सबसे ज़्यादा टीम देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है उन लोगों ने जोन की प्रेडिक्शन सभी ने बिल्कुल गलत की है, और जोन सबसे ही अलग बन गया है। इसके अंदर सिर्फ एक ही टीम देखने को मिल रही है, और जॉर्जो के अंदर तो गलत ही फाइट देखने को मिलेगी। और अगर हम ध्यान से देखें तो टीम नंबर 15 का जो अकेला प्लेयर था, जो ये अपने में अलग अलग टीम में स्प्लिट हो गए थे, तो वो एक प्लेयर मुझे लगता है कि वो तो या तो मारा गया है या तो खुद ही ने एग्जिट कर दिया है। At this point, it's anyone's game. I mean, if he was going to die and those points were going to be contributed, then I guess it's much better for him to just kill his character in the game, so that at least he does not give that extra one kill to someone, especially because everything that he does will be meaningless. So, well, that's a very heavy price to pay to just roam around
and have some fun while you're waiting in the lobby. Also, you see team number 2 and team number 3 just going for a fight. Let's see what kind of fight they're going for. And I believe someone just died here by team number 2's hand. We'll just have to see who it is. Let's see if there are any teams nearby. Perhaps we won't see anyone. बिल्कुल। Let's see. Let's see. टीम नंबर 3 का एक प्लेयर मारा गया है, वो भी टीम नंबर 2 के द्वारा। यहाँ पे इनकी टीम काफ़ी ज़्यादा खतरे में है और साथ में ही तीन ही प्लेयर यहाँ पे बचे हैं, तो अभी इनको अपनी टीम को रिवाइव भी करना होगा। और साथ में अगर हम ध्यान दें यहाँ पे टीम नंबर 2 को, तो यहाँ पे इन सभी बंदों ने गाड़ी लेती हुई दिखाई दे रहे हैं और ये बढ़ रहे हैं आगे की साइड। लेट्स सी मैप की तरफ एक बार ध्यान देते हैं कि ये कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके आसपास काफ़ी सारे प्लेयर्स दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अब जोन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जोन सभी से अलग है और जोन में जाके एक अच्छी पोजीशन बनाना एक गुड डिसीजन होगा। Right, and talking about team number 12, because I told you earlier that Harper has to be really careful, and he did get one kill from his team. I mean, for his team, the team that has been waiting in hospital all this time. Well, it is a good trade. It's not worth it if you ask me, because, well, it just isn't. But Team Bro will be just holding out, loss of one player. Perhaps they'll be able to collect enough information and money so that they can call his teammate back, but it's just unfortunate when that happens. And Team PCR, again, with two kills, in the sense that two of their teammates have died. It's just two players left at this moment. There's a certain amount of pressure, because you don't want to go down early in a game, right, Sigma? बिल्कुल, इतनी जल्दी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और यहाँ पे इनका एक प्लेयर नॉक भी है। एक टीम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई है, सो इतनी जल्दी तो मतलब यहाँ पे अगर आप कुछ किल भी ले लेते हैं फिर भी आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करना चाहिए, देन इनको काफ़ी कुछ किल्स निकालने चाहिए, तब आप अपनी टीम के लिए कुछ अच्छे पॉइंट्स बना सकते हैं। And team number 10 has actually split up 2 and 2. Perhaps they want to give each other cover and that coordinated play. But they should know that Team PCR's one person has died, but perhaps they're not aware of it. Simply, it's just two players remaining for Team PCR, and one person is down. So Demon, under a lot of pressure, he has to make the right calls here. Otherwise, one mistake from him can name their team the second team to get eliminated in this round. यहाँ पे अगर बात करें पीसीआर डेमोन की, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे 17 HP इनकी बची है। 1v1 फाइट हुई और इनका काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा, उन्होंने अपने सामने अपोनेंट के, लेकिन ये क्या ये इनका खेल यहीं पे ख़त्म होता है। पीसीआर का टीम नंबर 20 यहाँ पे टोटली फिनिश हो चुकी है। काफ़ी मतलब इनके लिए काफ़ी बुरी बात हुई है। But yeah, I mean, you do see these things come in. However, I think the next drop clash that we should be able to see should be for, let's see, Sigma, let's see which team here has the most potential for a drop clash, and it should be happening in Yasnaya, Polyana, with two teams, with Team AW, I believe, and let's see which team it is on their opponent's side. So it will be AW. Wait, are both of them AW? Do you think they have two teams? Do you think they would team up sometime? I mean, they are shooting at each other, but they do have the same tag. So how do you think that's going to work out? I mean, yeah, they're definitely fighting. It's definitely not a case of cheating. So we have cleared that out. However, I mean, they should know each other's drop locations. If you're from the same team, buddy, why did you drop together? Is it more of a rivalry than a friendship? What do you think is happening here, Sigma? मुझे लगता है कि दोनों आपस में एक दूसरे को जानते होंगे और हो सकता है कि दोनों साथ में एक दूसरे को चैलेंज दिए होंगे और साथ में एक ही ड्रॉप लोकेशन पे क्लैश कर रहे हैं और फाइट लेने की कोशिश, और मतलब चैलेंज होगा कि भाई कौन किसे हरा पाता है। तो ये कोई एक रीज़न हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो टीम नंबर 11 यहाँ से जाती हुई दिख रही है और AW की टीम वहीं पर ही रुकी हुई है। मुझे लगता है वो अभी लूट करने में बिजी हैं। अब क्या रीज़न है, आई डोंट नो। Well, again, now let's look at Team AW, team number 13's Ethereal, right? I mean, you look at the M4 and M762 combination. It's a really good combination in my opinion. And then again, you see the skin on that. You see the skin on the M762. I think it was the preseason's first season, or was it the second one, Sigma? I can't seem to remember. But if you reached Master, you got that M762 skin. And I remember I was so happy when I got that, because
I never had a skin for the M762, and it was like it's such a prestigious thing to have, because it's one of the OG's thing. I mean, definitely I'm flexing here, but don't you feel the same, Sigma, that these guns which you only get for reaching a certain rank in the season, and that too quite an early season, it's definitely something that I would like to show off later in the game, when the game's like a year old or perhaps 2 years old. I'll just show it and be like, aha, suck it. बिल्कुल, बिल्कुल। अगर Sigma? ऐसी गन अगर आपके पास होती हैं, पहली बात तो ये इतनी आसानी से मिलती नहीं, आपको इसके लिए काफ़ी ग्राइंड करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और साथ ही साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, तो जब आपके साथ नए लोग जुड़ते हैं, आपके साथ नए लोग खेलते हैं, तो आप उनको गन स्किन दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई मैंने मेहनत की है, मैं एक ओजी प्लेयर हूँ, तुम कुछ नहीं हो। Right, but a lot of players have been saying lately that they don't really want to see the crates coming back. I mean, once the crate goes, some people spend an upwards of $1,000, and I know a few of them myself, and they usually hate it when they bring back certain costumes which were time limited at one point, because it's the feeling of a uniqueness, a sense of uniqueness in it, a sense of vanity as well, and players usually dislike it quite a bit when that happens. But at the same time, it's money that the company can make for itself, so that's definitely something that players and company will be at an odd for. बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे बात करें टीम नंबर 10 के प्लेयर ने हवा में ही एक प्लेयर को मार गिराया है और वो प्लेयर रिवाइव होके आ रहा था। तो कभी-कभी हम लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर कभी भी ऐसा होता है तो काफ़ी सेफ पोजीशन में अपने टीममेट को बुलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका प्लेयर किसी एनिमी के पास से अगर होके गुजर रहा है, नीचे लैंड कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि जो रिवाइव वाला जो हम लोगों को पैराशूट मिलता है उसमें ज़्यादा हम लोगों को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता नहीं है। तो मतलब वहाँ पे अगर आप किसी एनिमी के पास जा रहे हैं या कोई एनिमी आपके पास आ गया है, तो वो हवा में ही आपको मार के गिरा सकता है। Yeah, that's true, but definitely it's somewhat of an upgrade. I mean, I remember when the game first started out, you had no control over where you landed. Nothing at all. But in the recent patches, they have added the functionality that when you're dropping down, there is a 130 meters range, and they were very specific about it. It wasn't 150, but 130 meter. I don't know what sort of the research went into making it 130 out of anything else, but it is 130 meters that you can move away from your original location, and that is assuming that you go towards the same position without changing it ever. So yeah, that. Also, Mansion and Yasna Polyana has two teams, I mean individually, respectively, and they are out in the zone, like they're out of the zone. For some reason, they choose not to go in. The zone at this point isn't really biting them too much, and I'll just use the word biting because it's almost like a small nibble at this point. Not something that, oh well, well, let's keep it kid friendly at this point. I should probably control my sense of humor at this point, but yeah, definitely, it's nibbling at them, it's nibbling at their health, and we should see them going inside the zone pretty soon, because military base is empty. Nobody knows that, but they're just assuming that it is filled with people. What do you think Sigma is going through these players' heads? बिल्कुल, अगर यहाँ पे अगर हम अभी ध्यान दें टीम नंबर 11 के साइड, तो ये भी जोन के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें फेरी पीर के साइड, तो यहाँ पे ब्रिज कैंप भी दिख रहा है और यहाँ पे कई सारी टीमें इकट्ठा हो गई हैं आपस में, और उसकी तरफ हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे टीम नंबर 3 का एक प्लेयर रिवाइव होकर भी नीचे आ रहा है। मुझे एक बार क्लिक करना चाहिए। टीम नंबर 14 की अगर हम ध्यान दें, टीम नंबर जो कि है कॉस्मिक, इनके सामने टीम नंबर 17 के प्लेयर दिख रहे हैं, जो कि एक छोटा सा हिल है, उसके ऊपर से पहाड़ी है और सामने से प्लेयर, यहाँ पे ब्रिज भी दिख रहा है। काफ़ी लोगों को ब्रिज भी क्रॉस करना होगा और ये एक अच्छा यहाँ पे पोजीशन होल्ड करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे सामने जो टीम नंबर 19 के प्लेयर है, उनको हल्का हल्का डैमेज पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। And FTC with a really long shot. I mean, at that point, I'm having trouble just going to that person if I don't click on their name. And DR team out in the open, and it's very difficult to predict and control all the damage that you take, because you're out in the open and you never know who might damage you. Like, look at that. He's still receiving damage from somewhere. He's not sure where. And if you look at it, where he's receiving it from, it's actually from further away from Team VG, which is at least 250 meters away. So, shots at that range, you definitely can't spot people very easily. You just have to rely on your sense
And when you do get those kills, when you get a free kill like that, it's one of the best feelings in the game. बिल्कुल, अगर मुझे भी तो कभी भी अगर फ्री के किल मिलते हैं तो मैं तो उनको भाई नहीं छोड़ता। मैं तो अगर मुझे मिलता है तो मैं सबसे पहले उन्हीं की तरफ, मैं रियल प्लेयर को छोड़ के फ्री के किल लूटने में ज़्यादा जो मतलब एक मज़ा होता है, एक फीलिंग होती है, वो अलग ही होती है। Right, and if you look at team number 3, so team number 3 is out there in the open. Well, not so much out in the sense that they do have 2 barns, and you have team number 5 who is trying to take a fight with them at that range. It's really difficult to confirm a kill at that range, because if they get the littlest bit of cover, there's no way that you can do anything except just harm their body armor, their helmet, and perhaps deplete the reserves of their health kits and such. So definitely not something that you want to do. Perhaps if you do get a few kills, I mean you get a few knocks, 1 or 2 knocks, then you should rush in with your vehicle. But as you look at it, their Dacia, they've covered it really well. I was assuming that the other team, which is team number 3, would have at least punctured some of the tires there, but it seems their Dacia is extremely safe, something that a mechanic would be proud of. बिल्कुल, अगर यहाँ पे देखें टीम नंबर 3 और टीम नंबर 5 दोनों आपस में एक दूसरे को स्नाइपर शॉट देने में बिजी हैं। दोनों एक दूसरे को स्नाइप करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जैसे ही 1 से 2 प्लेयर नॉक हो जाएं वो रश करे, कोई ना कोई दोनों एक दूसरे के ऊपर रश करना चाहते हैं। और यहाँ पे कोई भी किसी का शॉट कनेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक 4x स्कोप से, अगर बात करें टीम नंबर 3 के प्लेयर 4x स्कोप से मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उतना क्लियर यहाँ से दिखता है नहीं। टीम नंबर 5 भी वहाँ से फाइट लेने की कोशिश कर रही है। I don't think that fight is going to yield any results. So at the time, let's look at team number 14's Cosmic Lava with an AWM. And as you know, an AWM is less of a gun, more of a responsibility towards your team, because it has limited bullets. Of course, in this game, you can call for more ammo, but that is definitely a very hefty, more of a weight that you have on your shoulders. You have a certain responsibility towards your team to perform very well, because that gun, if you aim it well, it can destroy entire squads, it can destroy entire teams. And you know what, the most interesting thing right now, I think at this point, is team number 18. If you look at team number 18, they're just swimming. They don't care about the fight, they don't care about anything else. They're just here to just chill in the water. They're here to breathe in the wet air at this point. Is so weird. I think they just want to survive at this point. They don't want to engage in any fights. They know they're out in the zone. I mean, they're in the center of the zone. They know that they're safe here. So they're just going to wait it out. They're going to wait for something to happen, and they'll just move when the next zone moves along with it. बिल्कुल, टीम नंबर 18 मतलब यहाँ पे पानी के अंदर क्या करना चाहते हैं हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। ये अगर देखें यहाँ पे तो इनके सामने कई सारी टीम्स भी देखने को मिल रही हैं, इनके पीछे टीम है, इनके सामने यहाँ पे ब्रिज देखने को मिल रहा है, ब्रिज के ऊपर भी टीम्स हैं। अगर कोई भी इनको स्पॉट करता है तो पानी के अंदर अगर ये जाएंगे तो भी इनके लिए प्रॉब्लम है और ऊपर आएंगे तो भी इनके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर ये स्विमिंग करना चाहते तो बिल्कुल स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पॉट हुए तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा हो जाने वाला है, क्योंकि अगर एक ने स्पॉट किया, एक ने इसकी तरफ फायर किया तो सबका यहाँ पे ध्यान जाने वाला है और इनके लिए खतरे की घंटी बज जाएगी वहीं पे। Right, and as we were talking about Team 14's Cosmic Lava, going back to him with the AWM, I think he just got the knock on another person. I believe that person belonged to team number, well, let me just quickly check that. I believe it was team 12. Was it Harper? It could have been Harper, because he's the only one in that area who just got knocked out. So Clava could have gotten a drop on Harper, and Harper, well, man, that just feels bad to lose your helmet this early in a fight, because if you don't have a replenishment for that, you still have to go in the zone. And if you look at the zone right now, Sigma, you'll find that it is going to be really difficult for some teams to go on. But let's quickly switch to team 17. They just arrived in a boat. It's going to be really difficult for them to move on, but they will go down. They will go down from AW hard way. They had a really good angle on them. It was just unfortunate for team, the team that just came on this boat, because, well, they couldn't do anything. It was really a very bad situation for them. Unfortunate, really. Well, यहाँ पे हम लोगों को अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को
ब्रिज कैंप भी देखने को मिल सकता है। जैसा कि देखें कि यहाँ पे बाहर ब्रिज के दूसरी साइड यहाँ पे दो टीमें देखने को मिल रही हैं और पास में ये लोग भी टीम नंबर AW देखने को मिल रही है और दूसरी टीम कॉस्मिक की भी है, तो गाड़ी से आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये लोग ब्रिज कैंप में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं। वेल AW से मुझे थोड़ा उम्मीद लगती है कि वो लोग शायद ब्रिज के प्लेयर्स को मारने में थोड़ा सा आगे आएंगे। Alright, and if you look at team number 3, well, they seem to be in dire straits right now because they only have 2 players alive. And remember, this was the team that was taking a long-range fight. So something that you have to keep in mind: where did the enemy go? Did they just die? Maybe. Well, we do see 2 Dacias here. So from what I can understand, the enemy team did rush in. Unfortunately, KYS just was better than them. It's just unfortunate for them that they had to go against KYS because KYS knows how to win fights. You look at it, they have 4 kills. Exactly what I said. Perhaps that's exactly what happened. Do you think they'll go for a glider here? Because they have to cross the ocean and all of the vehicles here will just be very dangerous. Do you think perhaps they can go for a glider? Because that would be a Hail Mary of sorts. Let's see. Maybe Team 3 will really go for the glider. Please don't disappoint me. Look at that, Sigma. We see a glider in there. This is going to be really interesting because they will be flying over in a glider. Well, that's going to be really, really fun for me to watch at least. I don't know about you folks, but I do love myself a glider action so late into the game. अगर बात करें ग्लाइडर की, तो ग्लाइडर एक अच्छा एक व्हीकल है ही, बट ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो अगर कोई भी यहाँ पे फायर करता है तो काफ़ी जल्दी फटता भी है, जैसा कि हम लोगों को पास्ट में देखने को मिला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आप हवा में हैं तो अगर आपका ग्लाइडर फट रहा है तो अगर आप जंप करेंगे तब भी मरेंगे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इनके ऊपर फायरिंग होना स्टार्ट भी हो गया और इनका ग्लाइडर धुआं देना भी स्टार्ट हो गई है। और दोनों प्लेयर अगर इनके ऊपर और भी ज़्यादा यहाँ पे गोलीबारी होती है तो इनके लिए तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि अगर ग्लाइडर से कूदे तो भी नॉक और ग्लाइडर में रहे तो भी नॉक, तो मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाला सिचुएशन हो जाता है। Oh my god, they gotta jump. They have to jump. Will they make it? I think, yeah, they're so lucky. Their glider just suddenly caught on fire after crashing in the tree, and they did make it alive. They will be counting their lucky stars at that moment, because if I was them, I would be pretty stoked out. What do you think, Sigma? Do you think that this was just luck, or do you think there's a lot of skill involved as well? मुझे ऐसा लगता है कि ये लक है, क्योंकि मतलब ऐसी सिचुएशन बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि ग्लाइडर के साथ किसने कितना ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है। ये एक लक ही है और काफ़ी लकी हैं ये लोग कि 2 प्लेयर के साथ हैं और यहाँ तक ये सर्वाइव कर रहे हैं, और साथ में ग्लाइडर की यूज़ करने के साथ भी इतना अच्छा लक तो मुझे किसी का नहीं होता है। Okay, let's quickly switch to team number 5. Team number 5, that is 99. 99 has just received a rush from Cosmic's team, and it will be a 4-on-4 competition for them. Let's look at another player. Let's look at Thirsty at this point. Well, Thirsty की अगर बात करें तो थर्स्टी एक अच्छा प्लेयर है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे थर्स्टी बैक टू बैक नॉक देने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी सारे नॉक्स यहाँ पे निकाले हैं, लेकिन थर्स्टी का एक प्लेयर फिनिश है और एक 3 नंबर का प्लेयर नॉक भी दिख रहा है। थर्स्टी एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले मैच में देखा है, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। और अगर इनकी टीम की किल्स की बात करें तो 5 किल्स के साथ हैं और यहाँ पे जितने भी नॉक किए अभी वो भी किल यहाँ पे काउंट होने वाले हैं। Right, so Cosmic, let's see how Cosmic deals with the situation. It's unfortunate Cosmic does go down. 99 with the home advantage on this area because Cosmic was the one who rushed in. So definitely 99 will be getting all of their loot, all of their cash, so many resources. I don't even think they have somewhere to spend it on. Well, let's look at the map and let's look at where we might see the next potential clash happening. Definitely SSQ Void, the last person remaining from his team. And before this, remember guys, SSQ had 2 players remaining. So somewhere where Cosmic and 99 were going at each other's throats, with Cosmic going down, SSQ lost one of their players. बिल्कुल। और यहाँ पे अगर बात करें KYS की टीम की, तो KYS की टीम ने अपने एक प्लेयर रिवाइव किया है, तो वो अभी हवा में ही दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके आसपास कोई भी टीम नहीं है, नहीं तो हवा में उनको ही मारने की ज़रूर कोशिश करती है। तो इन्होंने अपने एक प्लेयर को रिवाइव किया है और वो नीचे आने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। अभी इनको काफ़ी ज़्यादा लूट भी करनी पड़ेगी और साथ में इनको जोन भी जाना है। तो KYS टीम नंबर 3 के लिए काफ़ी बुरी सिचुएशंस चल रही हैं। देखते हैं कि इनका लक कितना काम करता है यहाँ पे। Right, and let's look at team number 2. Team number 2 just called in something else.
maybe they called in a shield. I don't understand what's going on, but they're definitely shooting at someone else. Team number 7, well, it's just 2 players. Okay, look at that. Team number 7, 3 players in a vehicle, and I don't know where their 4th player is, but it's definitely not looking really good for them. I mean, their 3rd player is constantly losing health. Maybe he's out there in the blue. Will he be able to survive? बिल्कुल वो सर्वाइव कर चुका है और विद 4 एचपी ये भी काफी ज्यादा लकी है। कितना ज्यादा लक हम लोगों को आज के मैच में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये हील करेगा और इसके सामने टीम नंबर 7 तो ये खुद ही है। और लेकिन ये क्या, इसको यहाँ पे केवाईएस की टीम से पीछे से, जोन के पीछे से यहाँ से इसको शॉट पड़ा और ये नॉक हो गया। और मुझे नहीं लगता कि ये बचने वाला है, ये इसका सफर आखिरी होने वाला है। Right, so if you talk about team number 7's first player, he does spot a whole squad and he has the mini 14, he has the angle on them. He shoots once, but do you think they'll be going for him? Because Waded, I think they got the call that Waded is the last person remaining. Did we just see team number 7's first player look at team number 3's player Waded through the mountain? Did that look suspicious? Guys, maybe remember this moment and check it out later. It just looked kind of sus to me. What do you think, Sigma? Do you think that was a little suspicious? No, आई थिंक वो देखने का कोई ग्लिच है। यहाँ पे अगर बात करें टीम नंबर 7 तो अभी वो फाइट लेने वाले थे, लेकिन इनका एक प्लेयर मारा गया टीम नंबर 3 के केवाईएस द्वारा। तो वो सामने एक ही प्लेयर है, वो 1v3 करने की कोशिश कर रहा है। 3-3 नंबर के एक प्लेयर से 1v3 करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे टीम नंबर 7 के डीएसटी यहाँ पे गए उनके सामने, उनसे फ्लैंक करने, लेकिन ये क्या, केवाईएस ने उनको फिनिश किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी मारा गया। तो यहाँ पे केवाईएस की टीम का यहीं पे सफ़र ख़त्म होता है। But Yedid, I'm so sorry I called you Yedid, but Yedid did get a few kills to his name, and that's really helpful this late in the game because you will get some positional points, and at that point where you're the last person remaining, every single kill matters. Every single kill is something that your team didn't have before. I mean, if you're out there, if you are taking a fight, might as well go for every single kill that you can possibly get, because you never know when the tables will be turned on you. So go for every single thing that you can get. Just be very greedy about it and make sure you confirm those kills. बिल्कुल, यहाँ पे टीम नंबर 7 काफ़ी खतरे में दिखाई दे रही है। जोक की अगर बात करें तो ये जोन के अंदर ही जा रहे हैं और ये जोन के पास ही रुक गए हैं, और इनको काफ़ी ज़्यादा टीम्स ने इनके ऊपर स्प्रे देने की कोशिश की, लेकिन लकीली ये बच गए हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें टीम नंबर 8 की, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्लेयर से घिरे हुए हैं इनके आसपास, और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर देखने को मिल रहे हैं। और ये अपनी SLR से 6x के साथ यहाँ पे टैप देने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके पीछे से SSQV की एक टीम जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे शायद जोन के थ्रू मारी गई है, लेकिन वहाँ पे सामने उनकी गाड़ी रुकी है। और साथ में इनके do you see one player was just called in this late into the game? We are 26 minutes into the game and we saw a player just being called. I mean, that would be funny to watch because there's so many players here. Any single one of them could shoot him out of the sky. Then again, Team 8 with really good cover, really good positioning. They're just not in the zone. That's the only thing. That's the only kicker that they have. They're just not in the zone. If they were, that would be the perfect position to be in. वेल बात करें टीम नंबर 99 का जो प्लेयर रिवाइव हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जोन का डैमेज लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। क्या लगता है लाइट कि ये ज़मीन पे पहुंचेगा या हवा में ही मारा जाएगा? I think he's going to make it down, and the sole reason for that is his team has been taking a fight with any players that are nearby. So that is the right way to play a game, guys. I mean, I know this is late in the game, but that is definitely the right thing to do. It's like when you call your teammate in, you have to provide him with all the cover that you can possibly give so that he can come down, he can loot up, and he can provide you with the support for which you have called him in. Then again, team number 99's Slayer, team number 5's 99 Slayer may not be able to get the full loot that he wished for. No hard feelings there though. Also बिल्कुल, यहाँ पे टीम नंबर 9 के थर्स्टी का जैसा गेम प्ले हम लोगों को पास में देखने को मिला, इनके फिनिशेस इतने ज़्यादा हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे नॉक पड़े हुए हैं। इनकी टीम इनको हेल्प करने की कोशिश कर रही है, साथ में इनको रिवाइव अब मिल रहा है। अगर बात करें यहाँ पे लेकर की, तो लेकर ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे समझदारी दिखाई है, पीछे के प्लेयर को मारा है और ये अपने प्लेयर को रिवाइव भी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा यहाँ पे खेल देखने को मिला। And at the same time, if you look, the zones actually feels bad for Joke. Sorry, Joke, your journey ends here. You are so close to getting in the zone. Unfortunately, team number 5, 99, with a few shots coming in, they just destroyed you. Well, feels bad, man. So long.
But it was a good game. You lasted pretty well in there with a few knocks from the Mini 14. That's really good skill there. I mean, you do have to go for everything. Well, look at team number 3. Team number 3 has one player remaining. He's out in the open. He's all out of meds. So if he gets one shot and he cannot heal up, he is going to die. Perhaps he just landed and got the loot of someone who was very near death. And that's all he gets. That's all he gets for dropping in so late into the game. बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ पे हम देखें तो इसके पास अगर एक अच्छी गन है और अगर इसको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इसको फाइट लेनी चाहिए क्योंकि ये अकेला है। इसके पीछे भी टीम नंबर 8 देखने को मिल रही है। मुझे लगता है इसे फाइट लेने के बजाय सर्वाइवल पॉइंट की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि फाइट तो ये ले ही नहीं पाएगा, अकेला है, कोई लूट नहीं है, हेल्थ कम है। सो तुम्हें क्या लगता है, इसे फाइट लेनी चाहिए या सर्वाइवल पॉइंट की तरफ ध्यान देना चाहिए? Well, at this point, it doesn't even matter that much because there are only 3 teams remaining, right? There's team number 8, there's team number 5, and there's team number 3. So team number 3 already has gained the 3rd position. I don't know what's going to happen. Maybe we will see 99 take down VG. It does look like a possibility, and there goes 2 knocks. Maybe we'll get the 3rd one really soon. He's out of the zone, so he is getting chopped up pretty bad just by the zone itself. And yes, Team VG does go down. It is a 1 versus 4. Let's keep our eyes locked on Rinsa. Maybe he will get 1 kill. Unfortunately, he doesn't even get that. Probably should have just died to the zone instead of giving his kill to the winning team. And your winners here are Team 99 with 17 kills, which is 1 more than what we saw in the last game, which had 16 kills as the highest. Team 99 is thirsty with 5 kills. Laker with 9. Bro, Laker, that's really good performance, but how did you get 9 kills with 725 damage only? That seems a little suspicious. I mean, you have been feeding off of Thirsty's kills, haven't you? Don't lie to me there. I do see the numbers don't lie. Dream with 1 kill and Slayer with 2 kills. You see on 2nd position, you have team number 3, that is KYS. Sad 9? Yes, that's Sad 9, that is with 5 kills. Rinsa with 0. Yedid with 2. Yedid, very good performance there, I remember calling you out. You had good performance there, my friend. Plays with 0. Antis with 2 kills from Team VG. That is team number 6, position 3. So Antis has 2 kills. Enver with 1. I believe it is called Mikrob. Or I'm not sure how that's pronounced. I'm so sorry, my friend. You have 0 kills. Queen, I believe that's how it's said, is with 1 kill. Well, you have position 4, team 2. That is AW. Forget Me with 2, Supreme X with 0, Hardway with 4, and Zybor with 1. But I believe we have the highest number of kills in this match with Laker. He's definitely the MVP with his team gaining the 1st position. Let's look at if anyone else in this entire lobby was able to, beat Laker. I mean, not even close, except for one person. That is Choke Medbed B. I believe he's the one person who survived till the end with the Mini 14. So definitely he did get some kills for his team, 6 kills, and that team ended with 10 finishes. 10 finishes is quite a lot when you put in the survivor rankings as well. So Sigma, how did you feel about this match? Do you feel it was very adventurous? Because you did see a lot of luck coming in, and with the whole paragliding thing, I was so excited for that. Again, the way that the glider basically crashed into that tree, it felt very bad for them, and I feel that those players would have also felt their hearts just beat out of their chest as soon as I did. I mean, we shared that excitement there. What do you think, Sigma? Did you enjoy this match? बिल्कुल, मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये मैच में मैंने काफ़ी ज़्यादा लक देखा, काफ़ी ज़्यादा टीम्स के यहाँ पे किल्स देखे, काफ़ी लोगों की इतनी अच्छी स्नाइपिंग देखने को मिली। मतलब क्या ही अलग था। यहाँ पे कुछ ऐसी टीमें मिली जो सिर्फ पानी के अंदर सर्वाइव करते हुए तैरती हुई दिखी, कुछ ऐसी टीमें थी जो कि मतलब जोन से इतना ज़्यादा बच रही थी, कुछ ऐसे प्लेयर्स हम लोगों को देखने को मिले जो मतलब जोन से ही, मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि किसी को रिवाइव करते वो आता है। जैसे कि हम थर्स्टी की टीम बात करें 99 की, यहाँ पे उन लोगों का जो टीम का एक प्लेयर था वो मतलब कितना ज़्यादा लकी था कि वो नीचे उतरा। पहली बात तो उसने जोन से डैमेज खाया, उसके बाद जमीन के ग्राउंड के किसी भी प्लेयर की नज़र उसके ऊपर नहीं गई, उसने लूट भी की और अपने टीम को सपोर्ट भी किया। तो काफ़ी ज़्यादा लक हमको यहाँ पे देखने को तो मिला है, लक तो है यहाँ पे। Well guys, that was it for match number 3. We will be joining you soon in Troy. Till then, the caster's desk will be muted. Enjoy some music. Enjoy some popcorn if you have some. If you don't, you have a little over 2 or 3 minutes. Go get some popcorn, go get some drinks, and enjoy the match as much as we do. बिल्कुल, हम लोग मिलते हैं आपसे कम से कम 5 मिनट बाद।
सो हे गाइस, आ गए हैं वापस यहाँ पे टाइटन इंटरनेशनल्स इन स्क्रिम्स में, और ये हमारा अगला मैच होने वाला है। और ये मैच होने वाला हमारा ट्राई में, जहाँ पे देखने वाले हैं काफ़ी पिछले तो काफ़ी मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गए हैं, काफ़ी ज़्यादा फनी रहे हैं, कुछ लकीली कुछ बहुत ज़्यादा लक देखने को मिला, तो मज़ा तो इंटरटेनिंग आया। मुझे तो कास्ट करने में बहुत मज़ा आ रहा है। लाइट, तुम्हें कैसा लग रहा है? Guys, welcome back to our final match for the day for the POLABU Gaming's international scrims, and we will be we will be playing this match in Troy. Troy is one of my favorite maps. Honestly, it's one of the two, but it really is interesting for me because there's just so many new things that you get to see. A little stale in other versions of the game, so it's definitely a refreshing look to see here. Also joining me is Sigma Plays. Both of us are aspiring casters who just started out, so your support means a lot to us. Give us some feedback in the chat. We would love to see it, and we would love to improve so that we can keep entertaining you and just becoming better at this job. Now the plane has taken off. We will see the plane going from Port to Chester, Cornwall, Loganville, and Shelton, also passing over a graveyard shortly. So this is the thing. This is a flight path that enables the whole team to go every single place. Sometimes you do see the whole flight path is based up in the northern region or completely south, but this is almost dividing the map into almost say a 45-60 45-55 split. I mean, my maths was just about to be revealed about how bad it can be, but definitely we'll see some teams going for Chester. We'll definitely see some for Mall. We will be seeing some go for a Port, Penrose, Swanton. But what's left to see is if any team goes for Exhibit Hall, because as you guys remember, the last match is what it was left completely empty, and it did not get any love. I just hope that this time it does get some love. Now, if you look at Swanton, there are two teams going there, so we will see some drop clashes happening. Same goes for Mall. And let's see if there's any other place which will see a drop clash. I think Vermont will see three different teams going for it. Vermont is going to be really heavily contested for. What do you think, Sigma, is going to happen? बिल्कुल, यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइट होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप क्लासेस हमको कई जगह इस मैप में ड्रॉप क्लासेस देखने को मिल रहे हैं। स्वेंटन है, पोर्ट एक्चुअली नो, यहाँ पे अगर काफ़ी ज़्यादा है। अगर मॉल की साइड देखें तो यहाँ के आसपास दो टीमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे वर्मॉन्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी टीमें आई हैं, तो देखना होगा कि क्या जाता है और कैसे जाता है। एक चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर DW की टीम नंबर 16 को देखें तो ये थोड़ा सा साइड आई हैं। मुझे लगता है कि ये सब थोड़ा सा पैसिव खेलना चाह रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप क्लैश हो गया है। तीन टीमें, देखते हैं कि क्या होता है। और इनका एक प्लेयर हम लोगों को कम देखने को मिल रहा है, तो ये टीम थोड़ा सा यहाँ पे लॉस की तरफ है, थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है, क्योंकि एक 4 मैन की जो टीम होती है उसकी बात ही अलग होती है। तो 3 मैन हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो चुकी हो, लेकिन कोई नहीं, हम देखते हैं आगे की साइड। Well, if you look at Mall, then you'll see that Team Cosmic has almost been just eliminated right at the beginning. Cosmic did try to do something, but they split up. I mean, the rooftop was dominated by Team PCR. PCR facing no casualties there, but Cosmic right at the very beginning, right within the first 3 minutes, has already lost two of its players, and this is the very initial phase. And you don't want to be knocked out. I mean, you don't want to be eliminated this early in the game. It's embarrassing, honestly. I mean, you can only imagine what is going on through the heads of these players. बिल्कुल, जैसा कि हम लोगों ने पिछला मैच देखा था, यहाँ पे भी दो टीमें मॉल पे आई थी, वैसा इस मैच में सिमिलर देखने को मिल रहा है। और जो नीचे वाली टीम थी, जो रूफ पे थी, वो यहाँ पे डोमिनेट कर रही थी। नीचे वाली टीम काफ़ी खतरे में थी, और सेम टू सेम एग्जैक्ट फोटो कॉपी हमको वो लग रहा है। तो देखते हैं कि यार इस टीम के साथ क्या होता है। टीम कॉस्मिक के साथ क्या लगता है कि वो सर्वाइव कर पाएगी, वो अपने प्लेयर्स को रिवाइव कर पाएगी या नहीं, या यहीं पर इनका खेल खत्म होने वाला है? क्या लगता है लाइट? Well, historically speaking, in the past 3 matches, we have seen Cosmic perform quite well. So if they perform, if they survive, they should be able to go quite far into the match. But if you look at Team 2 down in Vermont, well, then one of the Team 2's player is knocked out. Another one is really low on HP. The third one is surrounded. And yeah, well, we have two knocks now. Going against Team 2, perhaps it's time for Team 2 to reconsider their strategy, because they are going down one after the other. One person remaining from their team who's a little further away than expected.
let's see what happens here. He will get 2 free kills, and those 2 kills may be all the kills that they can get in this match. मुझे ऐसा लगता है कि टीम नंबर 2 के प्लेयर को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एक प्लेयर इनका पूरा नॉक एंड फिनिश हो चुका है और यहाँ पे ये अकेला बंदा बचा हुआ है, लेकिन 1v1 फाइट ये लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये चाहता है कि यहाँ पे ये फाइट लेगा। देखते हैं कि इसका डिसीजन कैसा होता है, मतलब क्या लगता है कि ये यहाँ पे 1v2 या 1v3 कर पाएगा, अपनी टीम को बचा पाएगा, या तो ये अपने टीममेट को रिवाइव कर सकता है या यहाँ से जा सकता है, कुछ पैसे बाद में कलेक्ट करके अपनी टीम को बचा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम नंबर 16 के प्लेयर द्वारा इसको फिनिश कर दिया गया है और ये टीम नंबर 2 यहीं पे इनका सफ़र ख़त्म होता है। I believe team number 2 is the first team to get eliminated, and yeah, it's unfortunate that this happened to them. The positioning perhaps could have been better, and they will be reviewing this match. So team 2, if you're listening to me, just keep in mind that you just need to work on your positioning a little better, and I think you'll be able to perform much better in your next matches yet to come. That is to say, if you do qualify. So I hope that you do. So if you do, please just mind your positioning and you should be good to go. In the meantime, Chester does also have a drop flash, basically, that is Team Cam versus Team 80. I'm not sure if I saw Team Cam anywhere before. Which team is this? I wonder, why did we never see their name pop up? This is team number 7. Team number 7. Oh, joke. I remember this dude. This dude was surviving until the end, and he's a really good player. I mean, if he did survive, just look at him. He's just running outside towards the Volta. Perhaps he's dead determined that he will survive and get his team some placement point. It's just this early in the game, and he's already aiming for placement points. It's just a little unfortunate again. I mean, you don't want to be in his shoes right now. He must be cursing his luck and his teammates quite a bit. What do you think, Sigma? Who do you think is going to be the next team to get wiped out? मुझे लगता है यही होने वाले हैं टीम नंबर 7। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे जोक की, जैसा हम लोग पिछले बार देखने को मिला कि ये बंदा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव कर रहा था, तो मुझे लगता है इनकी एक स्ट्रेटजी होती है कि अगर तुम अकेले बचो तो तुम यहाँ से निकल लेना, अपनी टीम के लिए पैसे इकट्ठे करना, हमको बुलाना, हम खेलेंगे। मतलब कि जैसा पिछली टीम जो अभी हमने पहली टीम जो फिनिश हुई है उसको देखने को मिला कि वो फाइट ली है, और अगर यहाँ पे देखें तो उसका उल्टा देखने को मिल रहा है। जो कि यहाँ पे फिर आगे जा रहा है, मुझे लगता है सर्वाइव करने की कोशिश करेगा, अपने टीममेट्स को रिवाइव करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवर पॉइंट और प्लेसमेंट पॉइंट लाने की कोशिश करेगा। Alright, also if you look at Chester is practically uncontested now, and here's the interesting thing about Chester, right? You see that building out in the middle of nowhere. I mean, yeah, it's basically surrounded by just greenery and it's open. You see that main jail building. If we go into the jail building and you go to the bottom floor, there's almost like a reception area. But here's the thing. Here's an interesting fact about that. Below there, like inside, there is a jail, right? And one of the small cells, which is right nearby the staircase, it has a secret compartment that you can open, and it's all about luck, but sometimes, just sometimes, it can give you a drop weapon such as the MK14, the AWM, the AUG, the Groza. You can get your hands on them, even a P90 if you're lucky. I mean, you'll have to be really lucky to get a P90, but if you do get it early in the game and you have to go for some really close range fights, even with those 50 bullets, I think you can knock down at least 3 people. And when you do that and your teammate can help you out with the 4th, basically a squad wipe, just because your luck was really good. So battle royales, infamous for their luck attribute, but that is again what makes them very exciting. Skills and luck, the combination of which cannot be denied, will get you a chicken dinner. So Sigma, how do you think the luck factor plays out? Do you think it is very important, or do you think skills are more important than luck in this game? मुझे लगता है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। स्किल्स और लक अगर दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि आप स्किल्स कितना ही बढ़ा लो, लेकिन अगर लक, अगर जोन की बात करें, जोन तो लक पे ही डिपेंड करता है। अगर जोन आपके फेवर में है तो आप एक ही गेम को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छी किल्स निकाल सकते हैं, अपने लिए अच्छे पोजीशन पॉइंट्स पा सकते हैं। लेकिन वही जोन अगर आपके लिए अनलकी साबित हुआ तो हो सकता है कि आप पहले हो जो आप फिनिश हो रहे हो, तो ये भी हो सकता है। और अगर हम देखें यहाँ पे वर्माउंट की तरफ, तो यहाँ पे दोनों टीमें फाइट नहीं लेना चाहती हैं।
दोनों गाड़ी लेकर अलग अलग साइड पे जा रही हैं। एक प्लेयर एकदम ही किनारे जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि पिछले मैचेस से हम लोगों को देखने को मिला, टीम नंबर 16 काफ़ी ज़्यादा जोन से बाहर ही रहती है और काफ़ी ज़्यादा पैसिव खेलने में बिलीव करती है। वेल, अभी टीम नंबर 16 ने ही एक टीम को पूरी फिनिश की थी। यहाँ पे कुछ देर पहले मैंने देखा कि इनका एक प्लेयर मारा गया था, तो वो भी रिवाइव हो गया है। तो ये टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। वेल, इनके पास सिर्फ 3 ही प्लेयर हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है। अपने एक टीममेट को रिवाइव भी कर लिया है। वेल, अब इनके साथ तो कोई भी फाइट नहीं होने वाली है, क्योंकि जो टीम फाइट लेने वाली थी वो तो चली ही गई है, AW की टीम। और वो लोग जा रहे हैं यहाँ पे DR की टीम के पास सीधे जाते हुए। मुझे लगता है, क्या लगता है, वो फाइट यहाँ पे लेना चाहेंगे DR की टीम से। मिडिल ऑफ द मैप में वहाँ पे रेड जोन भी बना हुआ है। क्या लगता है, क्या होने वाला है? Well, I think that if there is a red zone, they should be pretty careful about that. But talking about other things that are happening, team number 4. Team number 4 is, well, they are split up. And I believe we have seen them being split up quite a bit. And I think one of the teammates actually died to a vehicle explosion, if I'm not mistaken. That just seems a little miscalculated on their part. I mean, vehicle explosion, if you die from that and there was nothing else contributing to it, you should have been able to react in time and get down. So again, guys, this is the qualifiers. You do see some mistakes happening. You do see some players just being unlucky, as we were talking about luck. And what factor does it have? I mean, how big of a factor is it in these battle royale games? Well, it turns out quite a big, because if you were unable to get down from a vehicle because it was going too fast and it was on fire, then just those 5 seconds when it's burning, you feel your heart beat so rapidly, and you feel that sense of dread, right? And you almost are tempted to make that jump, but if you're not that high on HP and you make that jump, you're gonna die anyway. So it's almost like those final moments before death where you're gonna die, but you just can't do anything about it. बिल्कुल। अब बात करें यहाँ पे टीम नंबर 11 की, तो इनके सामने एक टीम देखने को मिली है और सभी के सभी प्लेयर ने ड्रोन क्रेडिट के थ्रू कुछ ना कुछ तो सभी ने ऑर्डर किया है। और मुझे लगता है कि ये लोग अपने लिए शील्ड मंगा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोगों को देखने को मिल रहा है, सारी के सारे प्लेयर इनके अलाइव हैं, तो ग्रीन फ्लेयर मंगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो हो सकता है इन लोगों ने शील्ड, या तो यहाँ पे इन लोगों ने गन अपग्रेड करने के लिए अपग्रेड किट मंगाई होगी, कस्टमाइजेशन किट जिसको हम लोग बोलते हैं। Right. Before we continue, Sigma, just switch to team number 3 and team number 5. They are fighting in a house. It seems really unlikely that team number 3 will be able to survive this, because team number 3 has 2 players on the rooftop and there's no one else to support them. One player is remaining alive. It will be Yedid again. Yedid has a history of surviving the longest for his team. Will he be able to do anything else? No, he won't. And KYS does go down. Yedid with that last ditch, that last attempt to get something done. But team 99 has just been getting so many kills lately, this early in the game. I mean, we're not even done with 1/3 of it, and they already have 6 kills to the name, and which is more than most teams, more than what most teams had to their name. I mean, look at Thirsty. He's trying to climb up there, but buddy, if you want to climb up there, you have to know that you got to break the top part of the door so that you can climb up top. I don't think it's going to happen like this, man. Oh, well, it did. My bad. I mean, these are professional players. Of course, they're more knowledgeable than a caster can, but we shall keep in mind that these doors can be climbed up like that as well. So, Sigma, do you think Team 99 will remain at the top? I mean, we did see them perform so well. They have been getting lots of kills. They've been getting good positions. I think at the end of the game, at the end of today's match, when we get those scoreboards coming in, we should see Team 99 somewhere in the top 3. बिल्कुल। हम बात करें टीम 99 की, तो जैसा कि हम लोगों को मैचेस देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेयर हैं और इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो नो डाउट कि ये मतलब टॉप 3 में तो रहेंगे ही रहेंगे, और टॉप 1 की पोजीशन तो पिछले कई मैचों से इन लोगों ने मेंटेन करके रखी हुई है। और इस मैच में भी कितने ज़्यादा एग्रेसिव प्लेयर हैं, मतलब इनका एग्रेसिवनेस और इनकी स्किल्स मैच कर रही हैं। मतलब ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कम टीमों के साथ देखने को मिलता है। Right. If you look at Team 13, then Team 13's one player is knocked out. The other 2 are in their vehicle, and the one player knocked out does go down. So it is looking like the Team DR, which is team number 19, did get a few kills. Let's see if they'll be able to get some more. I mean, these are just 3 people who got really lucky, because someone's Volta flipped out, and you hate to see when that happens. I mean, it's just bad luck at that point. Then again, that is why. Do you remember when you looked at the interviews that I conducted? Beginning, guys, I am conducting interviews for a lot of teams in the Indian community,
and these teams are expected to perform really, really well. Some of them will lose out, and it's just if you can't have a winner without losers. But you will expect some of them to perform really, really well. Now, as I was telling you about the interviews, these teams have designated drivers so that when they drive around, the others can focus their skills only on killing, while the driver will never even practice, well, maybe some of it, but he will try to practice his driving skills the most, because you see, this game has a lot of terrain, and the vehicle physics is actually quite realistic in the sense that if there is a stone that you don't look out for, it can damage you quite bad. Or if there's a sudden slope, then your car can actually flip. And if you're in a car chase and your car flips, well, that's really bad, because you can't shoot out of a vehicle that is facing the earth. I mean, with the top down, you can't really fight. So that's just being trapped, and being trapped is something that nobody likes there. So Sigma, do you think that it is the right move to practice your driving skills in this game? बिल्कुल ड्राइविंग स्किल्स इसमें बढ़ानी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो टीम नंबर 10 और टीम नंबर 5 के बीच में यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो गई है। इन्होंने रश कर दिया है और सामने इनके टीम नंबर 5 है और टीम नंबर 10 आमने सामने है भिड़ने को तैयार, और इनको काफ़ी भी ज़्यादा डैमेज भी मिल चुका है। इनके कई तीनों प्लेयर को काफ़ी डैमेज मिला है और चौथे प्लेयर्स को भी यहाँ पे डैमेज मिल चुका है। तो इनको अपने आप को हील करना चाहिए और अच्छे से पोजीशन बना के फाइट लेनी चाहिए, क्योंकि टीम नंबर 5 का जैसे हम लोगों का कई सारे गेम देखे हैं तो उनको हल्के में तो नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे मौली आती हुई टीम नंबर 10 के एक प्लेयर के ऊपर और वो नॉक हो चुके हैं। और टीम नंबर 5 क्या खेल रही है, मतलब मैं तो सरप्राइज हो गया। और यहाँ पे ये टीम खत्म होते हुए, well, I feel that team number 5 still has a player remaining up top and only one enemy remaining. So even the enemy, one more, is pretty low on health. So if team number 5's player pushes out, then there is a chance that he will be able to get the knock for this. And Dream is going very carefully about this. He does not want to be the one losing out, because his team is further away and they cannot provide him with backup. So he has to be careful. And there goes Team 80. They go down. Team 99 Dream with a really good clutch for the team. And if you realize what just happened, that is two players, Laker and Dream, they got rushed at by the opponent team, but the opponent still lost. I mean, that's some skills you got there. That's some gun skills. You have to maneuver yourself really, really well. It's just so nice to see these matches happen, these clashes happen. And ultimately, you do see the blood, sweat, and tears put into it, the hard work that Team 99 has put into their gun skills. It does come out at moments like these, and these moments are what go into making into a video. When you make these different videos about killing others, I mean, all of those montages, this is definitely one of those moments, one of the defining moments for Team 99 here. बिल्कुल, टीम 99 से अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि टीम 99 को हल्के में मत लेना। अगर फाइट लेनी है तो फुल स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम लोग देखने को पा रहे हैं, जिन ने भिड़ा है उनकी अच्छी सी पिटाई हो गई है, उनके पूरी की पूरी टीम ख़त्म हो चुकी है। सो टीम नंबर 99 बहुत अच्छा, बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है। वेल, अगर मैप की साइड हम ध्यान दें तो मैप नया जोन यहाँ पे बन चुका है और बहुत सारी टीमें गाड़ी लेके जा रही हैं। और ये क्या, GW की टीम को अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन टीमें सारी की सारी गाड़ी के साथ एक दूसरे के आसपास खड़ी हो चुकी हैं। वेल, ब्रो की भी टीम वहीं पे देखने को मिल रही है। क्या लगता है कि यहाँ पे हम लोगों को व्हीकल फाइट देखने को मिल सकती है या नहीं? Well, vehicle fight will be something interesting to look at, but again, going back to Team 99, they did just call in Laker, but they might be getting sniped at by Team 11, because Team 11 was in the vicinity, but I don't think they're going to be taking fights anytime soon. I mean, we probably could see Team 8 and Team 11 going against each other, but it's just not happening. On the other hand, though, Team Bro is going really good. I mean, wait, did Team Bro just win against SSQ? Or SSQ is gonna win? Let's see. We have to look at Team SSQ versus Team Bro going against each other. But this is fun. This is really fun what the fighting is going on. बिल्कुल, यहाँ पे इन लोगों ने रद्द किया और मतलब काफ़ी इनके लिए ख़राब सिचुएशंस रही हैं। एंड मैं यहाँ पे स्विच करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा। चलो जोन की तरफ यहाँ पे ध्यान देते हैं कि क्या क्या हो रहा है। काफ़ी कुछ टीमें यहाँ पे बाहर देखने को मिल रही हैं, लेकिन ज़्यादातर टीमें जोन के अंदर आ चुकी हैं। और
एक टीम यहाँ पे जोन के साइड से लेकर ही चल रही है। जीआर माइनस की टीम यहाँ पे धीरे धीरे जोन के अंदर आने की कोशिश कर रही है और चेस्टर के पास दो टीमें देखने को मिल रही हैं, पीसीआर और G13, और ये भी शायद अपने अपने लिए अच्छी पोजीशंस बना रही हैं। Team number 12, Team Bro. If you look at it, Harper is perhaps the only person remaining from his team, and he has a lot of responsibility on his shoulders. He is stressed out, and he's trying to take a fight, but unfortunately chose the wrong fight there. And Dronex from his team does go down. He has, oh wow, that's a really good knock for Harper. Harper, you do have to be careful though. You can get knocked out pretty easily from that position if they get the angle on you, and that is what happens, man. When you see the enemy person go outside, you have to go inside. And if you do that properly, then perhaps you could have gotten a really good kill here. Then again, you were barely surviving on a thread. That was a really good last attempt. Perhaps the next time you take a fight like that, you'll be able to be successful. I pray for your success, man. बिल्कुल, यहाँ पे मतलब अगर आप कोई भी अगर एक छोटे से छोटे आपके डिसीज़न मैटर करते हैं और अगर आपके वो डिसीज़न थोड़े से भी गलत होते हैं, तो पूरी की पूरी टीम को भुगतना पड़ सकता है। वैसे काफ़ी अच्छी फाइट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली और डीडब्ल्यू की तरफ से काफ़ी अच्छा यहाँ पे शानदार प्रदर्शन भी था। और अगर जोन की तरफ ध्यान दें तो अगर टीम नंबर 16 काफ़ी ज़्यादा अभी भी जोन के बाहर ही है, चल रही है, इनको भी अभी जोन के अंदर जाना होगा क्योंकि ये जोन काफ़ी डैमेज देगा। अगर ये जोन टच हो जाता है तो ये और भी ज़्यादा डैमेज देना स्टार्ट हो जाएगा। और मतलब सही है यार, ये गेम अच्छा जा रहा है। और इसके अंदर अभी अगर अब बात करें तो सिर्फ 35 पीपल अलाइव हैं और जोन और भी छोटा हो चुका है। अब ये गेम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और भी ज़्यादा यहाँ पे फाइट होने वाली हैं और मैं तो एक्साइटेड हूँ इस बार कौन विनर बनने वाला है। But at the same time, you see 99 with so many kills there. Again, if you look at team number 16, DW, they have to be careful about this thing because they are outside the zone. And guys, here's the thing about electric vehicles and zone, right? So when the zone's coming near, you can hear a little bit of that crackling, right? A little bit of, well, wait, is Atomic getting shot at? Wait, Automatic, are you getting shot at from team? What team is this? It's so far away. This is team 19 with an MK14. DR's team with that MK14. Who is this player? Faxonet. Do you see? Faxonet with that MK14 is super long range fight. He still manages to damage him almost to the point of getting knocked out. It's unfortunate that he did not get that kill. Otherwise, it would have been really, really fun to watch. Do you think they will be pushing there? Or do you think they're just going to hold out? Because both teams, I believe both teams are outside the zone. Then again, the zone does have 30 seconds before it closes in. And here's the thing about electric vehicles, as I was getting back on topic. Electric vehicles do consume a lot more battery when they're outside the zone. So especially when you look at the map and you see the other team with a med bed in there. So team number 19, they do have to rush in. If they rush in now, perhaps they will go against the other teams which are camping at the edge of the zone. So this will be fun to see how team number 7 maneuvers their way around the map. There will be certain players who are in the vicinity, especially team 19, who know no fear and they just want to go for kills. But team number 7 in two different vehicles, Ilnor getting really, really damaged at this point. Perhaps it's the best that he takes some cover. Unfortunately, the zone's not gonna do him any favors, and his vehicle does walk away from him like a dog that was disgruntled a bit too far. And look at the vehicle. The vehicle is just going. I mean, the vehicle is not stopping. Poor guy, poor chap, Fox. Your vehicle's just reaching another dimension at this point. There's no way you can get back to it. You're trapped here. Let's see how you deal with it. बिल्कुल, अगर हम बात करें न्यू स्टेट की तो न्यू स्टेट में अगर आप अपनी व्हीकल पे ब्रेक नहीं लगाते हैं तो वो गाड़ी आपके लिए भी रुकेगी नहीं, वो गाड़ी चली जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, अगर कहीं ढलान है, ऊंचाई पे हो तो आपको अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगाना चाहिए। लेकिन ये क्या, अगर हम यहाँ पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा टीम नंबर 7 यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश होती हुई। अगर बात करें यहाँ पे जोक की तो जोक तो अभी अकेले बचे थे लेकिन इन्होंने पूरे अपनी टीम को बचा भी लिया था, ये बहुत अच्छा था। और यहाँ पे अपने आप को हील करते हुए और जोन में इनको निकलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे फॉक्स बच पाएंगे, अब इनको जोन में निकलना चाहिए, अपने टीम के लिए पैसे कलेक्ट करके अपनी टीम को बचाना चाहिए।
आगे जाएंगे अच्छी एक पोजीशन पकड़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो G13 के पास काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं और ये सब जोन में हैं और ये जोन बहुत डैमेज देने वाला है। तो इन Hold लोग on a second. Is this person gonna die? Joke! No! Bro, did you see what happened there? Joke was just on his way to the zone. I'm so sorry for cutting you off, but this is so important because he was on his way to the zone and the zone was, eating at his health. He had 2 first aid kits, but he chose not to use them and instead just died to the zone for no good reason. He just died, man. It's just wow, his team must be so angry at him. He could have just stopped to use those first aid kits, but he just chose not to. Then again, looking at team number 4, team number 4 has 1 person left from the team and is going against 2 players of the enemy team. Perhaps the enemy knows that there's only 1 person left, and so he should be really careful about that. बिल्कुल। अब मैं आप लोगों का ध्यान लाना चाहता हूं टीम नंबर 5 पे, जो कि पिछले कई मैचेस से इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। इन लोगों ने इस मैच में कर लिए हैं 19 किल्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा 16 किल, उसके बाद 17 किल, अब 19 किल। क्या लगता है कि ये लोग 25 किल्स क्रॉस कर देंगे इस मैच के एंड होते हुए थे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अपनी स्नाइपर से काफ़ी किल्स निकाले और साथ में अपने प्लेयर को रिवाइव भी कर रहे हैं। इनके पास ग्रीन फ्लेयर गन है और ये अपने टीममेट को बुला भी लिए हैं। तो ये टीम मतलब एक अलग ही स्ट्रेटजी लेके खेल रही है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर लग रहे हैं। तो मतलब इनसे तो बच के रहना चाहिए सबको। और 19 किल हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि ये मतलब टॉप 3 की बात ही छोड़ो, ये टॉप